Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to AICC signature program, Restrap Series Talk. So first at the outset, I'll request everyone to kindly switch off the phone or please put it in the silent mode. That's a sincere request. I'll now request our founding chairman, Mr. A.K. Shrivastava, to kindly present a bouquet of flowers and welcome the chief guest. Thank you, sir. I will now request our chairman, Mr. Nakul Kamani, to present a small gift, which is a unique thing for Jharkhand, a dokra, to the chief guest. Just check with that counter here. We have got this two gift line there. In the meantime, I'll request Mr. Himadri Sirkar to kindly welcome the guest of honor with a bouquet. Chairman, sir, please take your seat. We will get that gift and then again we will present it. So actually, we are starting on a very auspicious note. फूल के बारे में तो बने हमारे वेदों में भी कहा गया है कि उसकी सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम. So it gives a lot of energy to the people which is being to whom it is offered, and I'm sure that your talk will bring that kind of energy to this entire crowd. I think we have already got the gift, so I'll request the chairman, sir, to please present a small memento to our chief guest. And sir, you have to also do this honor for our guest of honor. So, ladies and gentlemen, when we started with our thought process of starting this talk, which we have called Restrap Series Talk, it is primarily because we are living in a very volatile or uncertain, complex and very ambiguous world, which we call as a VUCA world, where things are changing very fast and very, very exponentially. And it is impacting not only our organizational way of functioning, but also our social life, our education,
what we eat, what we think, and every aspect of our life is getting influenced by this ever-changing environment. So it is very, very essential that every organization starts to think and reorganize their policies, plans, and thought process to equip themselves with this ever-changing, outside environment. And that is why we need to, re-energize and restrap our policy decisions, whether it is in terms of government or we talk about social reformist or educationalist, or be it in any field. And that is why this restrap has been renamed as, or we called it as responsive transitional policy. So we are very, very thankful that the very first talk of this series is being delivered by a very, very eminent person, Honorable Member of Parliament and from Hazaribagh and Chairman Standing Committee on Finance, Mr. Jayant Sinha. We are very thankful to him for having accepted our request to deliver this talk. And now I will request our chairman, Mr. Nakul Kamani, to kindly welcome the entire audience and give the welcome address. I would also like to mention here that, sir, we are live with the national president joining in on an online mode. And this session is being viewed by the audience across the country from Delhi, Calcutta, Mumbai, Chennai. So IACC is having an online version of this at the same time. And there are a whole lot of dignitaries who are viewing it online this event. Thank you, sir. Good evening, ladies and gentlemen. Shri Jayant Sinha, Honorable Member of Parliament, Mr. Sanjeev Paul, Vice President, Tata Steel, my colleague, Commander Sanjeev Raman, mentor of the Indo-American Chamber, Mr. Himadri Sarkar, my immediate past president, Mr. A.K. Srivastav, members, colleagues from the chamber, dignitaries, guests, invitees, and friends. Thank you so much for joining us this evening. This is possibly one of the first physical, we've now almost forgotten what physical is, functions that we are hosting from the chamber. Definitely one of the first that we are hosting after I took over as the chairman. I'd like to tell you a little bit about the Chamber of Commerce, the Indo-American Chamber of Commerce, and because a lot of you have not really been able to grasp. In fact, some of you were asking me just a few minutes ago. So the Indo-American Chamber is headquartered in Bombay, and it was established in 1968. It was started by the US Ambassador, Mr. Chester Bowles, and prominent industrialists from Bombay, which included that time the Mahindra family, the Kilachans, and the similar sort of people. This quickly spread to Delhi, Chennai, Kolkata, and the rest of the country, and now boasts a membership of 1,500 of the top industrial houses in India. It has further spread to Bangalore, Hyderabad, Goa, Banaras, Pune, and of course, subsequently to Jamshedpur. Jamshedpur was established, I think, in 2018-19, but due to COVID, not much happened except, well, we had a visit of the Consul General at that time, and one or two other events which we were able to squeeze in.
before COVID, like everybody else, we got locked down as well. The Chamber's major activities include hosting specialized programs, seminars, and organizing business delegations to the US, support services for matchmaking both ways through various US consulate and commercial offices in India towards business investment in the USA and also seeking investments in India, business tie-ups, collaborations. These are some of the key objects of the Chamber. And the ISCC is a catalyst for ensuring favorable changes in the relationships with the US over the years. Some of the services in short which have been offered by ASCC to the members is assisting in locating business partners, assisting in JV and technological transfers with US companies, assisting in locating franchisees, agencies, and other such. In trade and commerce, providing a platform for trade delegations to India, providing trade delegations to the US, B2B meetings with US companies, and assistance for visit to summits, conferences, conventions, and trade shows. Interaction with government and corporates, conducting interactive sessions with US Embassy, consulates, foreign commercial services, travel and visa regulations, including and definitely including education with assistance on information on visas uh, for graduate, postgraduate, and specialized education and studies. In a nutshell, this is what it does, but there are many more areas because the ISCC works very closely with the various consulates located all over the country. We are delighted today that we've got Sri Jayant Sinha with us. He is a second-time parliamentarian. He is the chairman of the Standing Committee on Finance. He is also the chairman of the Oversight Committee on RBI, on various other areas, including SEBI. He has had a long and distinguished career in the private sector as well, having been with McKinsey as a partner. And he has a refreshing set of ideas on how India can address the climate change and how India can get into this net zero. And this is something which we all need to hear from him because this is a scary scenario that we are facing not only for us, but for our children. We are also very fortunate, and this, when I say fortunate, I mean it, really mean it, because I have my friend with us, Mr. Sanjeev Paul. We've been friends for 30 years. He is the Vice President of Tata Steel, Safety and Sustainability. He was arm twisted into going to Ranchi this morning, and I think he has made it back by the skin of his teeth. The weather was turning. He was just able to land, and he had told me, keep your fingers crossed, and in fact, I've just been able to uncross them a little while ago. Sanjeev, we are very happy to have you back here. He is also into sustainability in a big way, and he has put his considerable might behind this subject. So we are going to enjoy listening to these two gentlemen this evening. I hope all of you diligently ask as many questions as you want, because Sri Sinha has definitely expressed that he is ready to answer questions. Mr. Sanjeev Paul was not so forthcoming, but I'm sure he will also take questions. And I wish you a great evening. Enjoy
listening to them, enjoy a new perspective, and enjoy informing yourselves about what are things that are happening. I extend once again a warm welcome to my friends from the press. You have been, I've been told that Mr. Sinha is happy to talk to you separately after this evening's deliberations are over. So good luck to all of you. Thank you once again, all of you, for joining us this evening, and I wish you an enjoyable evening. Thank you. Thank you, Chairman, sir. Our national president, Mr. Kapil Kaul, has also given a theme for the ISAC this year, and which is ecology, energy, and environment. And I think it is very much aligned to what we are going to discuss today. And so it really, the two themes of IACC and what the Honorable MP sir would be talking, it would, give us a new perspective on the government policy. So before we come to that, I'll request our national president, Mr. Kapil Kaul, to kindly say a few words. Mr. Kaul, please. Mr. Kaul is on live through our network, and I think he is calling from Mumbai. Good evening, everyone. I hope I am audible. Yes, sir, very much. Right. It's my personal loss that I was unable to come across to Jamshedpur today as much as I tried. And I would have loved to, because the topic of discussion today is very close to me personally, and is also the theme for not just this presidential year, but for the coming years in the Indo-American Chamber of Commerce. My warm welcome to Mr. Jayant Sinha, Chief Guest and Speaker, and also the Honorable MP and Chairman of the Standing Committee on Finance. My warm welcome to Mr. Sanjeev Paul, Vice President Tata Steel. And I thank them both for gracing this occasion and coming to deliberate on what I consider and we consider something which is most critical to our lives. The pandemic, to me, is a watershed year in our civilization's history. And I take it as a positive event, because we were actually going astray as a civilization. In defense of nature, man has to be defended against himself, since man is his greatest enemy. The enemy is not another country, but our own inner desires, our vanity. I say this because if you can see on the logo next to Indo-American Chamber, there's E3, a logo which I've made. And it is talking about conserving energy, conserving ecology, and conserving the environment. I am following through from that earlier. The focus has been on the big E, one single E, and which is the economy. And that was driven by simple mass consumption, creation of jobs, profits, and lowering of cost. But it did not take into account the most vital elements, and which are all related to the environment. We talk about it, it's all a question of our values, our lifestyle. What we are looking at today is all mass consumption driven, brand driven. We are taking valuation of brands, but we are not taking the valuation of the environment, which should actually be in the costing. We are living in a waste-driven society right now, a waste-driven economic process. This has to stop. This mass consumption based on just simply consuming more and more is not sustainable. And therefore, we feel, of course, we certainly are living in a hedonistic era, no doubt. But obviously, we will have to transfer from here and go into a more mature and sustainable form of consumption,
of also manufacturing and living. From the Indo-American Chamber of Commerce, we are taking it upon ourselves to see that we are driving all these discussions to change from not just from the consumption, but from the reporting of our accounting standards to how our manufacturing processes should be altered. We've got the technology to actually get more focused on what is the real demand and not just consuming for the sake of consuming. Definitely, the economy runs on profits, but the waste that is generated has to be also factored in, and it has to come into costing. If brands can be valued, so can the environment be valued, and it should come into the process. There's a lot that one can say about what's going wrong, and however, I would certainly be looking forward to what Honorable Mr. Jansena has to say on the net zero development, which is somewhat like, I would say, Paul Polman was the ex-CEO of Unilever and who started this process in Unilever of going net positive. It's a process that we must all adapt to, and we must change our lifestyles and change our manner of functioning and consumption. Otherwise, I feel and I fear that we are getting into some serious trouble in the coming years. Global warming is definitely happening. Whether it's going to be a degree and a half, 2 degrees, God only knows, but it's definitely happening. Towards this end, from the Indo-American Chamber of Commerce and as a president, I've taken 2 initiatives apart from just the E3 model, which E3 model is also taking care of 3 C's and getting, I wouldn't say getting rid of 3 C's, but containing 3 C's, and which is crude oil with alternate energy, mass consumption with demand-led waste-free consumption, and third is corruption to an extent which also can be termed in a way as incentive in a certain way. And that's a debatable point. But 3 C's need to be contained with the 3 E's. We hope we can do that. But towards that, valuations matter in the stock market. And 2 sectors of the economy drive the stock market and valuations, which is transportation and housing. There is an example which I like to present out here, that every human being has arteries, and these arteries, within these arteries flow the red blood corpuscles that bring in nutrients to the body, energize the body, and it takes away the waste. And the faster the blood flows, the more efficiently the blood flows through our arteries, veins, and capillaries, our body functions better, we are healthier, and we are more efficient. The same goes for an economy and a country. The roadways are like all the highways, lanes, bylanes, etc., are like arteries, veins, and capillaries. And the red blood corpuscles are the transportation systems in whatever wheel or way you might think. The only problem is that while these transportation systems do deliver goods, services, etc., that revitalize the economy and keep it driving, and the faster it goes, the better it is. The problem is that the whole process of building a road, making a road, using a road, and with these transportation systems, it's polluting. The answer to that is bringing in drone mobility, which is non-polluting and which functions more efficiently than how a normal transportation system. That, of course, is a topic for probably another day, another time. I wouldn't like to delve into that, but the advantages are very, very discernible and obvious. And the second is our housing system. What I would like to say should go towards Adobe environmental friendly housing, using mud, using traditional techniques in a sophisticated manner. It's feasible and it's plausible.
we should adapt to it. With this, I would thank everyone all over again to be present here today. And I'm sorry that I'm not there in physical presence, but I do hope to make up for it in future. Thank you very much. Thank you, National President, sir. I think the topic which we are discussing, climate change, this is something which has impacted the world community. And world over, organizations have started to define what we call what should be the purpose of the organizations, right from being employer centric to employees to stakeholders to communities. Now we are looking at world as a community. But possibly what people are discussing today, the founding father of the Tata Group, Mr. J.N. Tata, thought about it in the early 19th century itself, when he laid the vision for the Tata Steel, and he said that you should, have very wide roads, plant more trees, because possibly he was envisaging or he was anticipating over a 50, 20, 30, 40 years down the line, things are not going to remain the same. So Tata Group has always been a torch bearer for looking at community development, and sustainability has now become the buzzword where you are talking about not only the company, but about community as such. So sustainability has got a very wider aspect from, people talking about 21 sustainability goals now come down to ESG. The financial reporting system is also changing. The government regulations is changing. And so we have amongst us the Vice President of Tata Steel, who looks after this entire aspect of sustainability and this ESG, safety and health issues, Mr. Sanjeev Paul. And we would be very, very happy to hear him and look forward to get enlightened with his views. Mr. Sanjeev Paul, I would give a little brief about Mr. Paul. Mr. Paul graduated in metallurgical engineering and joined Tata Steel in 1986 as a graduate trainee. He started his career at steel melting shops, where working his various capacities till 1998. After completion of a senior management program at CEDEP, France, he moved on to assume leadership roles in areas of general management in Tata Steel Limited. He assumed the position of General Manager Town Services in January 2003, and under his leadership, the Town Services Division became an independent company by the name Jusco, which he headed as Managing Director till 2010. He was the Vice President Corporate Services of Tata Steel from April 2010 till March 2013, after which he joined Tata Metallics as Managing Director. From July 2017, he assumed the role of Vice President Safety, Health and Sustainability at Tata Steel Limited. Apart from being an active member of World Steel Association and CII, he provides guidance as chairman and member of the board to various organizations such as Tata Metallics, Tata Pigments, Responsible Steels, etc. He is a very avid reader and a golfer. So welcome, sir. Stage is all yours. Thank you, Commander Raman. Mr. Jayant Sinha, Mr. Nakul Kamani, Mr. Himadri Sarkar, President Kapil Kaul on the video, ladies and gentlemen. When Nakul asked me to come and speak, he gave me the subject of sustainability. But sustainability is too wide a subject. The United Nations in 2015 or 16 came up with the Sustainable Development Goals, 17 of them. And anything and everything falls under the ambit of those 17 sustainable goals, sustainable development goals. Life on land, life underwater, poverty, climate change is just one of those 17 goals, that is SDG 13. So I presume that he's wanting me to talk about climate change, and that is a subject that I've picked up.
And taking a cue from what President Call just said, that man is probably his own worst enemy. You know, we have all heard the story of the frog who is in the water, which is gradually heating up. And he does not realize that the heat is increasing till it becomes too late. It's not funny that humankind is in that same situation as that of the frog. Is it ignorance? Is it apathy? Or are we waiting for a serious catastrophe, many of which have happened, are happening now, to realize that climate is heating up? We live in unprecedented times. If we just look at the last 5 or 6 decades and compare it with the millennia that humankind has seen or not even seen. Humankind became visible on Earth just 300,000 odd years ago, but this planet has been forever. And I'm saying compare just the last 5 or 6 decades with whatever has happened earlier, and you'll see a tremendous acceleration that the world is going through, a great acceleration. Social economic trends, just look at life expectancy. In 1950 odd, around the time India got independence, the life expectancy in India was around 33, 34 years. How much do you think it is today? It is doubled, 70. China is around 77. US is around 80. And if you go back in history, life expectancy would be not more than 23, 24 odd years. That is how medical science has evolved. And what it has done is it has increased the population on Earth. Tremendous growth in population. In the last 50 or 60 years, you will see many of us in our own lifetime have seen doubling. The population of the globe in 2050 was 3.5 billion. 3.5 billion. 2.5 billion. I'm sorry. It was 2.5 billion. Today, we are more than 7 billion. So in our own lifetimes, we have seen 175% increase just in the population on Earth. That puts a serious pressure on resources on Earth. Urbanization. If you go back in history, we do not know of many cities. There was Rome, there was Lothar, Harappa. These are cities which are well known, but those are very few. And those are on our fingers. Alexandria. Today, just India has more than 4,500 odd urban agglomerations. The amount of urbanization that is happening is unprecedented, and the rate at which it is happening is again asymptomatic. Primary energy use, subject which is we are talking about, that is the source of carbon. The amount of wealth creation that has happened just in the last 50 or 60 odd years. In fact, if we go back to industrial times, post the mid 18th century, ever since Mr. James Watt invented the power of, or discovered the power of steam. The amount of wealth creation that has happened in the last few years is unprecedented. Again, if you look at the long history that mankind has. Similarly, many other such socio-economic trends, consumption that President Call was talking of, it has been unsustainable and it has been unprecedented. And it has come at a cost. Earth system trends have shown an impact of the kind of consumption, the kind of unprecedented growth that we are actually undergoing. If you look at the concentration of nitrous oxide in the atmosphere, the concentration of methane, stratospheric ozone depletion, ocean acidification of the corals we are losing, tropical forest loss, the concentration of carbon dioxide. Pre-industrial times, the carbon dioxide concentration, it's a greenhouse gas. All these gases are greenhouse gases. In fact, H2O, steam is also greenhouse gases. Every diatomic gas of 2 different elements is a greenhouse gas. But every greenhouse gas has a different impact on the heating of the climate. CO2, methane, nitrous oxide, these are serious greenhouse gases. The amount of CO2 pre-industrial times used to vary between 212 ppm to 270, 280 odd ppm.
that is what through the millennia it has moved around. Today, we stand at 416 ppm. This is how it has grown. Just in 1990, it was 350 only. So this is the rate at which it has grown. Why it is a problem? Because it has a half-life of 10 years to 10,000 years in the atmosphere. So it lives, once you have emitted it, the only way you can fix it is through photosynthesis, which plants do for us. And plants have a limitation. A fully grown tree in its lifetime of 25 years can sequester only 25 kg of CO2 per annum. So all this oxygen that has gone into the atmosphere, carbon dioxide that has gone into the atmosphere, mankind has not as yet been able to find a solution how to directly capture it from the air and sequester it. So this is going to stay and going to continue to cause an increase in climate. Who have been the biggest contributors to this? Today, we produce around 37 gigatons of greenhouse gas, primarily carbon dioxide, in the atmosphere. In spite of knowing all that carbon dioxide does, there has only been 1 year where this abatement has happened, a little bit of reduction in the trend has happened, and that is the year of COVID, when the economy, the wheels of economy actually came to a grinding halt all across the world. It has again started rising once again. China contributes around 30% per annum of this 37 gigatons, US 15%, the 28 European Union countries around 9%, India at 7% today. Okay. But historically, that has not been the case. If you look at historical emissions which have caused these 416 ppm in the atmosphere, then around 1.5 trillion tons of carbon dioxide has been emitted into the atmosphere ever since James Watt, 1750 odd. Of this, 25% is US. It's scientifically established. 25% is contributed by the United States. The 28 European Union countries, 22%. China, in the last just few years, has already reached 12%. India is at a piddly 2 to 3%. So we have not been the major contributor to what has happened in the past. But we have ambitions to grow. We have ambitions to improve the quality of life of our people. And now when the knowledge has dawned on mankind of climate, the reasons for climate warming or heating, we are going to be expected to make sacrifices. We will be expected to tone down our ambitions on fossil fuel based growth. Now, scientists believe that to avoid irreversible system level changes, greenhouse gas concentration needs to be stabilized around 450 ppm of CO2 post 2030, just 8 years from now. Today we are at 216 already, 416 already. So that means we have a budget of just 34 ppm left to sustain a temperature increase of the climate of the globe by around 2 degrees centigrade. It is expected that this 34 ppm will be exhausted by 2030. So we do not really have too much of a budget left. Serious action needs to be taken. So in 2015, COP21 at Paris, 196, which is pretty much the entire world, 196 countries agreed to act and limit emissions of committed nationally determined contributions, which would be actions to limit carbon dioxide emissions, and which would be reviewed every 5 years. So this was reviewed in COP26 in Glasgow. I had the good fortune of going there and looking at what was happening there. Going into Glasgow, the science was calling for a step change in approach. A 50% reduction in emission was required by 2030. If
By 2030, a 50% reduction in this 37 gigatons of emissions per annum was required if emissions were required to be limited to 2 degrees centigrade. 34 ppm is the budget. A 50% reduction is required. Is it happening? Every year, we are actually seeing an increase in the emissions. We are not seeing a decrease. The only year we saw a decrease was because of COVID. So painting a bit of a pessimistic picture here, which I am hoping that Mr. Sinha will come and rectify. He has a story which is much more optimistic. But I just want to set the context. What is the challenge that we are facing? The challenge is actually huge. Warming is well underway. 1.2 degrees centigrade is already fixed, frozen, it has happened. So we are talking of a 2 degrees centigrade, 1.5 to 2 degrees centigrade, 1.2 degrees centigrade warming has happened. If all policies which have been propounded by these 196 countries get implemented, still the temperature rise will be 2.7 degrees centigrade. So it will not be limited to 2. This is going to cause a significant risk to human life. Around 800 million people will get impacted just by the sea level rises as the polar caps melt. 1.7 billion people will be exposed to extreme heat. They are already being exposed to extreme heat, sharp variation in climate, which will cause the misery of its own kind. Most of these countries where these 1.7 billion people reside are poor countries. A lot of this is going to happen to us in India as well. In fact, the Indian subcontinent, the South Asian countries are expected to be most vulnerable to the menace of climate change. But COP26 also made some progress. So around 90% of world has now committed to net zero. After India also made a pledge. India made a pledge for 2070. And there is a Panchamrit, which everybody knows the Prime Minister spoke about. But we did not agree to phasing out of coal. I wonder whether you recall the discussions during COP26. There was an agreement. First time, most countries agreed to phasing out coal in time. Coal is the biggest source of carbon dioxide emissions. It is India who did not agree to that. And I think for good reason, because we have ambitions here. And as I said earlier, we have just a 2 to 3% contribution to the overall carbon emissions. And we deserve our place in the sun as well. And I'm sure Mr. Sinha will have something to say about this. But we announced 2070. The rest of the world has announced, the developed world has said 2050 for net zero. China has said 2060. And I think it was in the fitness of things that we said 2070. So this is where we are. Coming back to this 37 gigatons of emissions, half of it is coming from power and short distance mobility. Short distance mobility is the cars and motorcycles that we drive. This is the fuel coming out of that. This is the emissions coming out of that, and carbon from coal-based power. That is half of it. With renewable energy coming down to affordable prices, below fossil fuel-based power prices, battery costs coming down drastically the way they have in the last 15, 20 odd years, scientists do believe that the war on decarbonizing these two sectors, around 45 to 50% of the emissions has been won, and it is a matter of time that we will be able to eradicate that. So it is adoption of those policies and those technologies in every country. What has not been won as yet are areas like steel, cement, and coming from the steel industry, that is a matter for us. Around 7% of the total 37 gigatons is global emissions coming out of steel. The next 30 odd years, the next 3 decades till 2050, the maximum growth of steel capacity is going to happen in India. India today produces just 110, 120 odd million tons of steel. By the middle of the century,
we will be producing around 450 million tons of steel. Tata Steel, coming down to brass tacks, is around 16 to 17% of market share, domestic market share. We will then need to be producing around 90 million tons. And this decade, we have already announced that we will double capacity. But the technologies to produce low carbon embedded steel do not as yet exist. So we will be producing or setting up capacity, which will be the high carbon intensive capacity. So this is the conundrum that the world faces, India faces, and more than anybody else, this is the biggest concern Tata Steel faces. But action we need to take. We need to take action, or as President Kaul also probably said, the next few generations won't spare us, won't forgive us. We have been part of the problem so far. We need to be now a part of the solution as well. And we need to act not to save the planet. The planet can take care of itself. We need to save life as it exists on this planet. And that is the challenge, my friends. I won't stand between you and the main course anymore. Thank you so much for listening to me. Thank you, Mr. Sanjeev Paul, for giving us a very holistic views on the emission trends. The only solace is that possibly India is not a major contributor, but that doesn't mean that we will not be impacted by this rising or increasing trend. In fact, in one of the articles I was reading, it says that by 2050, the world population will be around 1,000 crores, 1,000 crores, and that would require roughly 70% more food to be produced than what we are producing in 2017, and roughly around 7,050 million tons of fertile soil will be losing each year. So almost in the last 40 years, 1/3 of our cultivable land we have already lost. So these are very, very big numbers which we are talking. And how do we find a way forward, and what is the solution for the country, the net zero solution, which the government of India is thinking of? I think we have a very eminent speaker among us. He has also introduced a private member bill on this subject. And let me introduce to this august audience the main speaker for the evening, Mr. Jayant Sinha, Chairperson, Standing Committee on Finance, Parliament of India, and BJP Lok Sabha member from Hazaribagh. Mr. Sinha is a second-term member of Parliament from Jharkhand, India. Mr. Sinha won his Lok Sabha election in 2014 and 2019 with record margins. As Chairperson of Standing Committee on Finance, Mr. Sinha leads the 31-member parliamentary panel that has oversight of the Ministry of Finance, Corporate Affairs, Statistics and Program Implementation, and the Niti Aayog. In addition, the panel has parliamentary responsibility for the Reserve Bank of India, the Security and Exchange Board of India, the Insolvency and Bankruptcy Board, and the Insurance and Pension Regulating Authorities. Mr. Sinha is a very active parliament. He is very active in parliament, having opened the debate on India's annual budget on multiple occasions, as well as introducing an important private member bills. In 2021 budget session, he introduced climate change net zero carbon private member bill in 2021. Previously, Mr. Sinha served on India's Council of Ministers from 2014 to 2019, first as Minister of State for Finance and then as Minister of State for Civil Aviation. During his time as Minister, Mr. Sinha gained wide recognition as an innovative and result-oriented policymaker with singular successes ranging from piloting the legislation that brought India's game-changing bankruptcy code to establishing India's sovereign wealth fund to privatizing multiple airports under an entirely new regulatory framework. As Aviation Minister, Mr. Sinha was instrumental in upgrading safety and security across India's fast-growing aviation system. He launched the UDAN Regional Connectivity Scheme, which expanded the number of operational airports in India by 50% in just 3 years.
Mr. Sinha has implemented several major digital initiatives such as Digital Sky Drone Policy and Digi Yatra Digital Traveler Program. Prior to his career in public service, Mr. Sinha was partner at Omdia Network and managing director of Omdia Network India. As a global thought leader, Mr. Sinha has been published in Financial Times, Times of India, Economic Times, Indian Express, Business Standard, Harvard Business Review, and McKinsey Quarterly. He has pioneered new thinking on platform-based businesses, innovation-driven entrepreneurship, climate change, and sustainable development. Mr. Sinha's Getting to the Green Frontier development model is gaining broad acceptance as net zero pathway for India in the 21st century. Mr. Sinha has an MBA with distinction from Harvard Business School, an MS in Energy Management and Policy from University of Pennsylvania, and a BTech with distinction from IIT Delhi. He's awarded the Distinguished Alumni Award from IIT Delhi in 2015. So we could not have a better and such a eloquent speaker and a distinguished panel person to address the first session of this Free Step series, which we have started. Very welcome, sir. We all are looking forward to hear you. आप इसको जरा प्रेजेंटेशन को ले आइए तो मैं थोड़ा नहीं I have the mic as well. हाँ आप लोग आ जाइए नीचे बैठ जाइए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पे विराजमान मुंबई से हम सब के साथ जुड़े हुए इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के नेशनल प्रेसिडेंट श्री कपिल कौल जी, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के झारखंड के अध्यक्ष श्री नकुल कामनी जी, यहाँ उपस्थित श्री हिमाद्री सरकार जी, टाटा स्टील के मेरे मित्र, और अभी हम लोग जब मंच पे चर्चा कर रहे थे तो मुझे पता चला कि मेरा भी जन्म 1963 में हुआ है, उनका भी जन्म 1963 में हुआ है, तो वो मित्र तो हैं ही, लेकिन उनका जन्म मार्च में हुआ, मेरा अप्रैल में हुआ। तो मेरे बड़े भाई श्री संजीव पॉल जी, उपस्थित यहाँ सब मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा सादर जोहार। मैं सर्वप्रथम इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने एक अवसर दिया, फिर झारखंड के लिए नहीं सिर्फ, लेकिन पूरे देश के लिए उद्योग नगरी जमशेदपुर आने के लिए, और आप सब बुद्धिजीवी के साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, जैसे अभी श्री संजीव पॉल जी ने विस्तृत रूप से समझाया कि क्लाइमेट एक्शन हम सबके लिए इतना गंभीर और इतना महत्वपूर्ण विषय क्या है, उस पे मैं कुछ अपनी बातें रखूंगा। लेकिन उसके पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं पिछले कुछ ही दिन हुए मुंबई में 3 दिन के लिए था, और क्योंकि हम लोगों की स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस वाली जो है, उसके द्वारा हम लोगों को मुंबई में सब जो बैंक्स हैं, सब जो रेगुलेटर्स हैं, उनसे मिलने के लिए हम लोगों को बहुत एक अच्छा अवसर मिलता है। हम लोगों ने बैठकर बैंकों के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी के साथ, आरबीआई के साथ लंबी चर्चाएं की। देश और विश्व की जो अर्थव्यवस्था की जो परिस्थितियां हैं, उन पे हमारी लंबी चर्चा हुई। और मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में तो कहूंगा, जलवायु परिवर्तन के बारे में आप सबसे बातचीत तो करूंगा ही, लेकिन उसके पहले जो विश्व में और देश में आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसके बारे में आपको जरा मैं बताना चाहता हूं। वास्तविकता यह है कि हम समुंदर में रहते हैं, कुएं में नहीं। हम समुंदर में रहते हैं, कुएं में नहीं। लेकिन आप आम तौर पे जनता से बात करें, सभी से बात करें, सब लोग अपने फोन पे लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, वहां भी लोग फोन पे लगे हुए हैं, फोन पे लगे हुए हैं, अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें लगे हुए हैं, कल के बारे में सोच रहे हैं, परसों के बारे में सोच रहे हैं, अपने कुएं में काफी हद तक प्रसन्न है, काफी हद तक प्रसन्न है अपने कुएं में। हम लोग, सब लोग रहते हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि हम लोग अपने कुएं में हैं, लेकिन हम रहते हैं समुंदर।
हम रहते हैं समुंदर में, और साथियों आज के समय इस समुंदर में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है, एक बहुत बड़ा भूकंप आया है, और उसके कारण एक सुनामी हमारे और बढ़ती चली जा रही है। सुनामी आ रही है, और हम चाहे सोचे कि हम कुएं में हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित नहीं। उस समुंदर में, उस विशाल समुंदर में, उस गहरे समुंदर में एक बहुत बड़ी सुनामी हमारे और बढ़ती चली जा रही है। और जो हमने मुंबई में चर्चाएं की, जो बातचीत हुई इस सुनामी के बारे में, और आज अगर ये सुनामी चलते हुए आ रही है, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो है कि एक कोरोना का बहुत बड़ा एक पैंडेमिक हुआ है। संजीव जी ने बताया कि ये जो पैंडेमिक हुआ है वो विश्व में 100 साल में एक बार आता है, रोज रोज नहीं आता है। और जिस कुएं में हम लोग हैं उस कुएं में भी वो कोरोना आया। हम सब लोग 2 साल घर में ही बैठे रहे, सब उद्योग लगभग बंद हो गए, सब आना जाना बंद हो गया, कहीं भी हम नहीं जा पाए। तो जो कुएं में भी थे वो प्रभावित, समुद्र में। और कहां से आया वो कोरोना? कहीं बगल से आया क्या? खड़गपुर से आया क्या? हजारीबाग से आया? कहां से आया वो कोरोना? हम लोग जो कुएं में जो रहते हैं, हमें एहसास करना चाहिए कि वो कोरोना आया वुहान से, चीन से, वुहान से आया, और हमें अपने कुएं में जाकर उसने प्रभावित कर दिया। तो समुद्र में, कुएं में नहीं है, समुद्र में ये कोरोना आया। दूसरा जो है वो है यूक्रेन का युद्ध। यूक्रेन का युद्ध जो है वो क्या उड़ीसा में हो रहा है, क्या बंगाल में हो रहा है, क्या हरियाणा में हो रहा है? कहां हो रहा है भैया? यूक्रेन। मैं यहां बहुत सारे लोगों को कहूंगा, आप जाके मैप में बताइए तो यूक्रेन कहां है भैया? आपको मालूम है कहां है यूक्रेन मैप में? अगर मैं मैप दिखाऊं आप यूक्रेन बता पाएंगे? नहीं बता पाए। आम जनता से पूछिए, उनको कोई पता ही नहीं यूक्रेन है कहां, कोई रुचि नहीं है यूक्रेन में। किएव में क्या हो रहा है, लिएव में क्या हो रहा है, डॉनबास में क्या हो रहा है, क्या उनको उससे मतलब। लेकिन जब आप तेल भरने जाते हैं, जब आप कड़वा तेल आप खरीदते हैं, तो जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है आपके कुएं में भी प्रभावित कर रहा है। आज अगर तेल अपने मोटरसाइकिल में आप तेल भर रहे हैं, उसका भाव बढ़ गया है, तो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि कोई एक ऐसे देश में जिसका हमने नाम ही नहीं सुना था, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उस देश में महायुद्ध चल रहा है। आज हम लोगों को तेल में ज्यादा दाम भरना पड़ रहा है। तो हम समुद्र में रहते, कुएं में नहीं रहते, हम समुद्र में रहते हैं। और चाहे हम अपना फोन पकड़ के दिन रात लगे रहें, चाहे हम आईपीएल देखते रहे, नेटफ्लिक्स देखते रहे, हॉटस्टार देखते रहे, हम उस कुएं में रहकर समुद्र से नहीं बच सकते। तो हमें समझना चाहिए। और एक तीसरा मामला है जिसके बारे में संजीव जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, और वो तीसरा मामला है क्लाइमेट चेंज। अब कोई सब बोलेंगे यार क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, क्या बोल रहे हैं आप? हमको इसमें कोई रुचि नहीं। हम अपना नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, अपना आईपीएल कर रहे हैं, हम अपने घर जाकर अपना फोन देख रहे हैं कि किसने मुझे व्हाट्सएप में क्या भेजा। किसको रुचि है? लेकिन जब बिजली आपके घर में कटती है तब आपको रुचि होती है कि नहीं होती? बोलते यार मैं तो आईपीएल भी नहीं देख पा रहा हूं। तो बिजली क्यों कटी? आज के समय पूरे देश में बिजली की यह संकट क्यों हो रही है? क्योंकि साथियों, जब से हम तापमान, जब से हम टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 122 साल अंग्रेज आए ना, उन्होंने पूरे देश में टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, और तब से 122 साल से हम लोग टेम्परेचर की रीडिंग लेते हैं। हर मुख्य शहर में टेम्परेचर की रीडिंग ली जाती है। 122 साल से इस देश में टेम्परेचर की रीडिंग ली जा रही है। इन 122 साल में जितना गर्म ये मार्च हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। 122 साल में, 122 साल में जो अप्रैल आया है, जितनी गर्मी हुई है कभी नहीं आया। अभी हम गए गेस्ट हाउस में तो हमने पूछा कि भाई जमशेदपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, अभी कितना हुआ? उन्होंने कहा 43 डिग्री, 43 डिग्री। जमशेदपुर में 43 डिग्री होता था पहले मार्च अप्रैल में, हमको तो नहीं लगता। अभी 45 भी हो गया। मैं बताऊं हजारीबाग में, और मैं जब सदन में क्लाइमेट चेंज पे बोल रहा था तो मैंने हजारीबाग की जिक्र की। हमने कहा जब हम लोग बच्चे थे हजारीबाग में, तो रात को सोते समय हम लोग कंबल ओढ़ा करते थे,
पंखे की तो लगभग जरूरत ही नहीं होती थी, दोपहर में गर्मी हो जाती थी तो बरसात आ जाती थी। अब हजारीबाग में इतनी गर्मी हो गई है कि हम लोगों को पंखा क्या एयर कंडीशनर चलाना पड़ा। क्यों? और जब इतनी गर्मी हो जा रही है और बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो जब बिजली कटती है तो सब लोग शिकायत करते हैं कि नहीं करते हैं, गाली बोलते हैं कि अरे यार बिजली नहीं। हम लोग समुंदर में रहते हैं, कुएं में नहीं। हम लोग समुंदर में रहते हैं, कुएं में नहीं। और अगर कोई अमेरिकन एसयूवी चला रहा है इलिनॉय में, ओक्लाहोमा में, अगर रूस में परमाफ्रॉस्ट जो है वो पिघल रही है, तो उसके कारण आपकी जिंदगी में प्रभाव हो रहा है, आपकी गर्मी बढ़ती चली जा रही है, आपकी बिजली में कटौती हो रही है और आपको दिक्कत हो रही है, चाहे आप माने या ना माने। ये वास्तविकता है, दिस इज द रियलिटी। तो इसलिए क्योंकि हम समुंदर में रहते हैं, हम कुएं में नहीं, तो चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कहीं युद्ध हो, चाहे कहीं क्लाइमेट हो, इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। हम बिना चाहे हम लोगों को कुएं में हम रहना चाहें, लेकिन बिना चाहे हम लोगों को इन सब विषयों पे ध्यान देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेदर वी लाइक इट और नॉट, however much we choose to isolate ourselves and block these matters out, we simply cannot block these matters out. It's a matter of urgent and vital importance for us to pay attention to all of these things, because this is what we were discussing in Mumbai. I spent a long time with the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, with important banks, important investors, and these are the things that everybody is worrying about. Because this tsunami that is coming our way is going to impact us, and I'm not talking about tsunami. मैं ऐसे एक सुनामी की बात नहीं कर रहा हूं जिससे हम लोग कल परसों प्रभावित हो रहे हैं। मैं एक ऐसे सुनामी की बात कर रहा हूं जो हम लोगों को अगले 10, 20, 50 साल से प्रभावित करेगी, हम लोगों की आगे की पीढ़ियों को प्रभावित करेगी, और हमारी जिम्मेवारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर इस पे कुछ काम करें, नहीं, लेकिन जागरूक तो होइए, इतनी तो जिम्मेवारी आप निभा सकते हैं, और निभाना जरूरी भी है। क्योंकि अगर आप नहीं निभाइएगा तो जिस संकट की ओर हम लोग बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, हम लोगों को रोकने की और कोई तरीका हम लोगों को नहीं नजर आएगा। तो जागरूकता, और इसलिए क्योंकि हमें जागरूक होना है, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा प्रयास है कि जहां भी मैं जाकर इस विषय पे मैं चर्चा कर सकता हूं, मैं आप लोगों को कुछ बातें रख सकता हूं, मैं रखूंगा। ये बहुत जरूरी है, ये मेरी जिम्मेवारी, ये मेरा दायित्व है। और सदन में सदस्य होने के नाते वहां चाहे भाषण के द्वारा या प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हम लोग ठोस कदम इस विषय में ले सकते हैं, हम लोग ठोस कदम लें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं इसके बारे में। तो साथियों, ये परिस्थितियां, इन सब से हम लोगों को अपने को दूर नहीं करना है। हम सब लोगों को इन सब बातों पे ध्यान देना है। और अगर जैसे अभी संजीव जी ने बताया, ये क्लाइमेट चेंज बड़े तेजी से हम लोगों की ओर बढ़ते चले जा रहा है। अगर हमें कुछ करना है तो साथियों हमें क्या करना है? आज जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो कोई नकारात्मक प्रेजेंटेशन नहीं। मैंने परिस्थितियां आपको बताई, मैंने गंभीरता आपको बताई, मैंने इसकी अर्जेंसी मैंने आपको बताई। लेकिन अब अवसर है काम करने के लिए, अवसर है कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ ठोस कदम लेने के लिए। और इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ, with a positive message, I have come to you, but I will once again repeat and then I will get into the presentation, that it is absolutely important that you get engaged. I'm 59 years old. I just said I was born in 1963. मुझे एक हजारीबाग याद है जो हरियाली वाला हजारीबाग था। मुझे एक झारखंड याद है जहां जंगल ही जंगल होते थे, हाथी घूमते थे, शेर घूमते थे। आज जो हम लोग झारखंड देख रहे हैं, हजारीबाग देख रहे हैं, वो आप खुद जानते हैं। वो दुनिया जो है धीरे दिन पे दिन चलती चली जा रही है। लेकिन अगर हमें उस दुनिया को बचाना है, जो भी कुछ बचा कुचा है, अगर उस दुनिया को बचाना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के लिए हम लोग एक नेट जीरो डेवलपमेंट मॉडल हम लोग कैसे खड़ा कर सकते हैं। और मैं टाटा स्टील को धन्यवाद देना चाहता हूं, संजीव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि टाटा स्टील इन सब विषयों पे एक बहुत ही
सही रूप से आगे बढ़िए, बहुत पॉजिटिव सोच से आगे बढ़िए। संजीव जी 2045 तक आप लोगों ने कहा आप लोग नेट जीरो हो जाइएगा, इफ आई रिमेम्बर। हाँ, तो इनकी पूरी सोच है कि जल्द से जल्द टाटा स्टील नेट जीरो हो। जो टाटा स्टील अगर नेट जीरो हो रही है तो देश को भी नेट जीरो की ओर बढ़ना होगा। मैं यहां जरा नीचे उतरता हूं, मैं जरा प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा कि नेट जीरो डेवलपमेंट मॉडल हम लोग किस तरीके से अपना सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। पहले हमें समझना है कि विकास होता कैसे है। अगर आप सोचें कि विश्व में विकास कैसे हुआ है, हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, यूरोप की बात करें, हाउ हैव दोस कंट्रीज डेवलप्ड? व्हेन यू स्पीक टू एन इकोनॉमिस्ट, एंड आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मुझे अर्थशास्त्री कहते हैं, मैं बिल्कुल अर्थशास्त्री नहीं, आई एम एन इंजीनियर। जैसे संजीव जी इज एन इंजीनियर, मेनी ऑफ यू इंजीनियर्स, आई एम एन इंजीनियर। एंड व्हाट द इकोनॉमिस्ट टेल अस कि अगर आपको डेवलप करना है तो आपको दो चीजें करनी पड़ती हैं, दो आपको वेक्टर्स पे चलना पड़ता है। एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि स्टील फैक्ट्री खड़ा करिए, और दूसरा आपको अर्बनाइज करना है। जमशेदपुर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। दिस इज एन इंडस्ट्रियल अर्बनाइज्ड सिटी। सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ पीपल वर्किंग इन अ पैडी फील्ड in China going to work in a textile factory. That's how development happens. All economists will tell you there is only one way to develop: industrialize and urbanize. Next page. And what the economists will tell you in terms of theory, that to industrialize and urbanize, what happens is we use technology to become more productive. We use technology to become more productive. What we do is we move forward, we give people what they want, which is jobs and wealth, and at the same time we improve the planet as well. And so as we move from the farm, we use technology and we become more productive. Next page. And the whole idea of development is what is called farm to factory. Using industrialization and urbanization, you make people better off and you make the planet better off. That is the theory of डेवलपमेंट। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछे, बोलेंगे कि भाई ऐसे ही होता है, आप लोगों को सरायकेला से ले आइए, खूंटी से ले आइए, लोहरदगा से ले आइए, उनको जमशेदपुर में लाइए और जमशेदपुर में आदित्यपुर में कारखाना में उनको खड़ा करके उनसे काम करवाइए। इसी तरीके से आप तरक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। लेकिन ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। आज जो हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो फार्म टू फैक्ट्री की जो आपने बात कही, फार्म टू फैक्ट्री के लोगों को आप लोहरदगा से, गुमला से, सिंहभूम से लाकर आप उनको आदित्यपुर में डाल दीजिए। इससे हम लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो संजीव जी बता रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? आपको मालूम है कि ये कोरोना वायरस हुआ क्यों? ये कोरोना वायरस क्यों? कोरोना वायरस इसलिए हुआ कि हम लोग नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं, जहां जानवर रहते हैं, हम लोग उस पे जाकर हम लोग एनक्रोच कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। तो वो जब हमारे फिर हैबिटेट में आते हैं तो उनके अंदर जो वायरस है उससे हम लोगों की इम्यूनिटी नहीं बनी हुई है। तो वो जब वायरस हमारे अंदर आता है तो हम अपने को सुरक्षित, हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमें नहीं रख सकता है और हमें फिर ये पैंडेमिक्स होते हैं। और अभी नेचर में एक बहुत बड़ी लोगों ने रिसर्च करके एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बताया है कि क्योंकि हम लोग इस तरीके से नेचुरल हैबिटेट में इंक्रोच कर रहे हैं, बहुत तेजी से और भी कोरोना वायरस टाइप के वायरसेस आएंगे, क्योंकि हम लोग नेचुरल हैबिटेट में इंक्रोच कर रहे हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि डेमोटांड में हम लोगों का 6 एकड़ का बगीचा है। कुछ ही वर्ष पहले जंगली हाथियों का झुंड जो है वो हमारे घर में आ गया, बहुत तोड़फोड़ करके निकला। क्यों? क्योंकि जो एलिफेंट कॉरिडोर्स थे वो आज के समय एलिफेंट कॉरिडोर्स पे हम लोग खनन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो बेचारे हाथी जाए कहां? वो गांव में आ जाते हैं, लोगों के घर में आ जाते हैं खाने के। ये हम लोग नेचुरल हैबिटेट में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। करेंगे तो पैंडेमिक्स और होंगे, बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ज़ूनोटिक स्पिलओवर्स। ज़ूनोटिक स्पिलओवर्स, viruses go from animals and they come into us. That's called zoonotic spillovers because of this kind of unsustainable development. जो हुआ क्लाइमेट चेंज का, जो मैंने बताई, अभी मैं और बताता हूं। लैंड
की स्कैसिटी है, पानी की स्कैसिटी है, ट्रैफिक आदित्यपुर में, जमशेदपुर में कितना ट्रैफिक हो गया, क्यों? क्योंकि हम लोग अर्बनाइज कर रहे हैं, पर वो ठीक से हो पा रहा है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो फार्म टू फैक्ट्री का डेवलपमेंट मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं, हम लोग इस रास्ते पे नहीं चल सकते हैं, ये तरीका ठीक है। और जो इसके नकारात्मक प्रभाव हैं, जो इसके नकारात्मक परिणाम है, द नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, वो हम लोग रोज दिन पर दिन इनको भुगत रहे हैं। नेक्स्ट पेज। और क्लाइमेट चेंज पे तो संजीव जी ने बता ही दिया, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन एक एक आंकड़ा है जो प्लीज आप इस पे ध्यान दें, प्लीज ध्यान दीजिए। उन्होंने बताया जेम्स वॉट। हु इज जेम्स वॉट? आपको मालूम है जेम्स वॉट कौन है? गलत। James Watt is not an actor. James Watt was the man who in 1750, 1760 developed the steam engine. And the steam engine in England, steam engine के आधार पे पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ। तो जो अब टेम्परेचर का जो लोग टेस्टिंग करते हैं, कार्बन का टेस्टिंग करते हैं, वो लोग कहते हैं कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्री जेम्स वॉट, फ्रॉम 1800 टिल 2022, 2 साल हुए दोस्त, 200 साल हुए। इन 200 साल में जो पृथ्वी है उसका तापमान कितना बढ़ा है? तापमान, पृथ्वी का तापमान 200 साल में एवरेज मीन टेम्परेचर कितनी बढ़ी है, किसी को मालूम है? हाँ, संजीव जी को तो मालूम है। और आप बताएं। 2 डिग्री। गलत। अभी तक तापमान 1800 से लेकर 2022 तक, श्रीवास्तव जी, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर जेम्स वॉट, आफ्टर जेम्स वॉट। इन 222 years टेम्परेचर हैज गॉन अप बाय 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हजारीबाग में जब पंखे की जरूरत नहीं थी, एसी की जरूरत हो गई। समझ में आया? 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। पार्ट्स पर मिलियन कार्बन 414 from 180. Not of much consequence, no one is interested in that. But हजारीबाग में हमको पंखे की जरूरत नहीं थी, अब एसी की जरूरत होगी। 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड सर, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या अनुमान है? क्या अनुमान है? 2022 से लेकर 2100 तक, from 2022 to 2100, another 80 years. Do you know what the scientists are saying? कि how much the temperature is going to increase in the next 80 years? What is the best scientific analysis? Does anyone know? 2 degrees centigrade more. 222 years we've had 1.2 degree temperature, अब हमको एसी की जरूरत है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको क्या, हम क्या फ्रिज में रहेंगे? क्या करेंगे हम भाई? जो 43 डिग्री 45 डिग्री जमशेदपुर में हो गया है, तो बॉस 50 डिग्री हो जाएगा तो क्या करिएगा आप? जमशेदपुर में 50 डिग्री हो जाएगा, आपके बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल? क्या करिएगा? और अगर बिजली नहीं होगी, घर में एसी नहीं होगा, गाड़ी में पेट्रोल आप खरीद नहीं सकेंगे, तो बेचारे आएंगे जाएंगे कैसे? घर में रहेंगे कैसे? 2 डिग्री सेंटीग्रेड मोर, वी आर गोइंग टू हैव 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी भी कोई फोन देख रहा है? मत देखिए फोन। मैं कहां फोन देख रहा हूं? नहीं, मैं फोन से नहीं पढ़ के, ये मैंने किताब पढ़ के बताया। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब जो चीजें हैं बड़ी खतरनाक चीजें, बहुत गंभीर चीजें। ये हम लोग कुएं में रहकर इससे नहीं बच सकते। हम लोग कोरोना से नहीं बच पाए, लेकिन ये जो स्लो मोशन क्राइसिस आ रहा है क्लाइमेट चेंज का, 2 डिग्री सेंटीग्रेड मोर, दैट मींस एक्सट्रीम वेदर कितना जबरदस्त होगा। मार्च अप्रैल इतना गर्म क्यों? साइक्लोन आ रहा है, अभी आपने सुना है साइक्लोन आ रहा है। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल इज हीटिंग अप सो फास्ट। आई एम टेलिंग यू एज अ साइंटिस्ट, व्हेन द ओशन वाटर हीट्स अप दैट क्विकली, you draw energy from the ocean water to get a cyclone. And when the ocean water is already so warm, the cyclones are stronger and more frequent. That is what is happening. 2 degrees centigrade more. Next page. After Glasgow, Sanjeev ji, this is after Glasgow. Now, if it is 2 degrees centigrade, do we want that? So everybody is saying कि नहीं भाई, किसी भी हालत में 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल वार्मिंग नहीं हो सकता, बचा दो।
सो ग्लासगो में, पेरिस में बात हुई कि नहीं 1.2 हो गया, इसको रिस्ट्रिक्ट करो, 1.5 तक ही जाए, 2 तक ही जाए, 3.2 किसी भी हालत में 3 नहीं। तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोगों को उसको रिस्ट्रिक्ट करना है 1.52 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो नेट जीरो, दुनिया नेट जीरो बाय 2050 हो जाए। सबका कहना है, सब साइंटिस्ट जो है वो कह रहे हैं यार 2050 तक उसको नेट जीरो कर। तो पूरी दुनिया जो है उसकी कोशिश है कि हम अभी 55 बिलियन टन पे हैं इक्विवेलेंट कार्बन एमिशंस, इसको घटाते घटाते 2050 तक किसी भी हालत में उसको जीरो कर दो यार, फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। भारत का कितना है अभी श्रीवास्तव? 3.5 बिलियन टन। और इसकी मॉडलिंग कभी किसी ने की नहीं थी, हमने इसकी मॉडलिंग चालू की, कभी नहीं किसी की। पर जब मैंने आईआईटी से मैं जाकर अमेरिका गया तो मैंने डिग्री की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इन एनर्जी पॉलिसी। दैट वाज अ डिग्री इन ऑपरेशंस रिसर्च। आई रैन एंड देन आई वेंट टू working on energy systems. I used to run very large models, the best models in the world to understand what was happening to the energy system on the planet. And I was trained professionally, first and foremost, as a modeling person, as an operations research scientist. So when I started looking at this, I said, well, all right, let me find the best experts, the best modelers in the world. And I asked them, where is India headed? Where is the modeling? How do we figure out what's going to happen to India? If the world has to get to zero by net zero 2050, where is India headed? They said, we don't know, we can't tell you. I said, you must know, you must be doing global modeling. They said, we've done global modeling, but we haven't decomposed it for India. So then over the last 3 years, पिछले 3 वर्षों में, मैंने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, कैम्ब्रिज इकोनोमेट्रिक्स, स्टैनफोर्ड, एनर्जी इनोवेशंस, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, एमआईटी, इन सब के साथ मैंने काम करके वी हैव नाउ बिल्ट इन सम वेज द मोस्ट sophisticated models in the world for India. And I did it because I wanted to know what the answer is. Where is India headed? The world needs to go to net zero by 2050. India right now is heading to 7 billion tons of cells. Not 3, not 0, 7 billion tons. Next page. And I will tell you a little bit more about this. Now, even as we are dealing with climate change, even as we are dealing with the tsunami, साथियों आपको मालूम है कि हमारे देश में और हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या बेरोजगारी। यहाँ हजारीबाग से मेरे कुछ मित्र आए हुए हैं, उनको मालूम है कि जब हम घर में रोज आना 100-150 लोगों से 200 लोगों से मिलते हैं, अधिकांश लोगों की मांग यही होती है कि भैया रोजगार का कोई हम लोगों को साधन दे दो। और मैं संजीव जी को बताऊंगा कि आपको आश्चर्य होगा जानकर, हजारीबाग में जो ये आपके जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का एग्जाम होता है ना जेईटी के, उस जेईटी के ही 10-15 लोग आके करके सर कुछ मदद कर दीजिए सर। तो आज हमारे देश में रोजगार के लिए सब लोग परेशान, युवा हैं वो परेशान है, माँ बाप परेशान है कि सबकी अच्छी नौकरी लग जाए, और वो कोई जाकर कंस्ट्रक्शन साइट में काम नहीं करना चाहते। अभी मैं आ रहा था जमशेदपुर, मैंने देखा बहुत जगह सड़कें बन रही, सड़कों में बेचारे मजदूर लगे हुए हैं, गर्मी में लगे हुए हैं। अगर कोई आता है मेरे पास, अगर उनको मैं बोल दूं जाइए फ्लाईओवर पे काम करिए, सड़क पे काम करिए, वो रोजगार चाहेगा? बोलेगा सर अगर चाहता है होता तो हम आपके पास क्यों आते? तो कोई नहीं चाहता है कि वो ढाबे में काम करे या कंस्ट्रक्शन साइट में काम करे। सब लोग चाहते हैं यार अच्छा एयर कंडीशन कोई चेंबर हो, बैठे आराम से काम करे, 5 बजे घर चले जाए। क्यों श्रीवास्तव जी? फिर आईपीएल चलेगा बढ़िया वाला, आईपीएल देखेंगे। हम जाकर कहे को कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करे, कोई नहीं चाहता है। सब कोई व्हाइट कॉलर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी चाहते हैं। सही है, होना भी चाहिए। अगला, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे देश में, और ये मैं प्री कोविड की बात कर रहा हूं, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 100 करोड़ लोग वर्किंग एज के, 15 to 64, 100 करोड़ लोग वर्किंग एज के। और उस 100 करोड़ में से आज के समय सिर्फ 50 करोड़ जो है, 500 मिलियन जो काम करते हैं, और उसमें से 40 करोड़ जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में, यानी कि वो ढाबा में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। सिर्फ करीब 10 करोड़ जो हैं वो
तनख्वाह वाली नौकरी में, फॉर्मल सेक्टर में, और उसमें से जो 35 हैं वो तो सरकारी नौकरी में, बचे सिर्फ 6.5 करोड़ जो टाटा स्टील में, टिस्को में काम। फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग सिर्फ 6.5 करोड़ है। लेकिन सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं? नकुल जी, सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं? अगर ये 3.5 करोड़ बैठे, आप किसी से भी हमारे झारखंड में पूछ ली, बोलेगा तो सरकारी नौकरी चाहिए, सबको सरकारी नौकरी। लेकिन उस सरकार को पैसे कौन देता है? अब मैं आकर जैन बाबू की क्लास वित्तीय परिस्थितियों पे नहीं करूंगा, लेकिन वो भी एक चर्चा का विषय है। सरकार को चलाने वाले हमारे प्राइवेट सेक्टर ही लोग तो हैं, क्योंकि जहां टैक्स आप भरिए तब जाकर पैसे आते हैं सरकार के पास, फिर सरकारी नौकरी लोगों की लगती है। अगर टैक्स नहीं आएगी तो सरकार कैसे चलेगी? और वो टैक्स कहां से आता है? जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो आप समझिए कि हम लोगों को इस पे ध्यान देना है कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियां वाले लोग कितने, यानी टिस्को में कितने लोग काम कर सकते हैं। और अगर आज के समय इतने लोग हैं हमारे पास, और 25 करोड़ लोग आने वाले हैं काम करने के, तो एक तरफ क्लाइमेट चेंज की समस्या और दूसरी तरफ बेरोजगारी की समस्या। ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे है ना? बेरोजगारी की समस्या आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है ना? सही। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन हम लोग क्या करें? हमारे भोला महतो साहब हैं, टाटी झरिया में रहते हैं, हमारे वोटर हैं। संतोष जी, आशीष जी कहां गए? बैठे हैं कि नहीं बैठे? हम भोला महतो की कहानी सुना रहे हैं। हम वहां दिख रहा है आपको वहां से? अच्छा, तो मैं भोला महतो की कहानी सुना रहा। अब भोला महतो जी के पास हम जाकर क्या बोले? रोजगार के लिए वो हमारे पास आते हैं, गांव में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो हम उनको क्या बोले कि आप जाके जमशेदपुर में ऑटो रिक्शा चलाइए। ऑटो रिक्शा में उनकी क्या तनख्वाह है? 7,000 रुपए अगर उनको गांव में मिल रहे हैं, 15,000 रुपए उन्हें ऑटो रिक्शा में मिलेगा। ऑटो रिक्शा आके कार्बन और वातावरण में डालेगा और फिर क्लाइमेट चेंज की समस्या होगी। तो वी कांट टेक हिम फ्रॉम वेयर ही इज एंड पुट हिम इनटू अ ब्राउन जॉब। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अगला सर, आप फोन मत देखिए सर, आप भी फोन पे आ गए। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें कुछ और करना है, इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर हम भोला महतो को टाटी झरिया से हम लोग उसको ऑटो रिक्शा में लगाकर हम लोग उसको जमशेदपुर या हजारीबाग भेज देते हैं, तो वही उसी हम लोग उसी रुइनस पाथ पे हैं। ये काम तो चलेगा नहीं इससे। चलिए आगे बढ़िए। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हम लोगों के लिए, भोला महतो जी के लिए एक अलग किस्म का हमें उससे जॉब देना है। उसे एक ऑटो रिक्शा में नहीं डालना है। अगर वो ब्लू स्मार्ट का ड्राइवर बन जाए या ओला उबर का ड्राइवर। ब्लू स्मार्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्लू स्मार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसमें ओला उबर टाइप का राइड हेलिंग का आप कर सकते हैं, लेकिन उसके सब जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक, और वो टाटा ही बनाती है। टाटा टाइगर को वो लोग चलाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ टाटा टाइगर, 5,000 दे हैव नेक्स्ट ईयर। So what if we took Bhola Mahto and instead of putting him in an auto rickshaw, we put him in a Tata Tiger electric vehicle and made him into a blue smart driver, and he's now making 50,000 rupees a month. So we have to change our thinking. This is the positive part. We need to create jobs. Let's get these people out of these brown jobs. Let's put them in green jobs. यानी कि ऑटो रिक्शा नहीं चलाए, वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए, गाड़ी चलाए, उसकी तनख्वाह होगी, उसको हम लोग आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी दें और इस चुंगल से हम लोग इससे मुक्त करें। ये हमें करने की जरूरत है। अगला पेज। और ये जो हम कहते हैं नेट जीरो डेवलपमेंट मॉडल, गेटिंग टू द ग्रीन फ्रंटियर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है उसको हम लोगों को इस संकट को एक अवसर बनाना, संकट को अवसर बनाना। हमें एक तरीका पाना पड़ेगा कि हम लोग ये गलत फार्म टू फैक्ट्री वाला जो मामला है ये हम लोग ना अपनाएं। इसके बजाय हम लोग एक गेटिंग टू द ग्रीन फ्रंटियर वाला डेवलपमेंट मॉडल हम लोग अपनाएं, जिसमें कि लोगों को हम लोग सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जाए। ये हम लोगों को तरीका अपनाना आगे बढ़े। तो इसका हम लोगों ने बहुत जांच की। ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बिना आंकड़ों के, बिना तर्क और तत्वों के आधार पर मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने इस पे मॉडलिंग की, मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है। लंबी बात है, संक्षेप में द हेडलाइन, ladies and gentlemen, the headline is net zero is net positive. Net zero is net positive.
यानी अगर हम नेट जीरो की ओर बढ़े, नेट जीरो की ओर बढ़े, वो हमारे लिए नेट पॉजिटिव। ये पूरी मॉडलिंग हमें दिखा रही है। और संजीव जी को मैं एक बात पे करेक्ट करना चाहूंगा। संजीव जी ने कहा कि वी डोंट वांट टू शट डाउन कोल। वी डोंट वांट टू शट डाउन कोल, व्हाई? बिकॉज वी वांट आवर प्लेस इन द सन। But the sun is the answer to this, which is if we move to green technologies, friends, we are actually better off. Today, as you know, Sanjeev ji, the cost of 24/7 coal versus the cost of 24/7 solar. Solar is actually cheaper than coal. So why should we use coal? I have a suggestion, and I'm going to write an article on this. I think we should take Coal India and call it Energy India. Take Coal India and call it Energy India. And instead of running these huge coal mines, please come to Hazaribagh and I will show you all the coal mines that are there and what they have done to our land. उस कोयले से उसको निकालने से बजाय हम लोग वहां काहे नहीं सोलर लगा दें, वो एनर्जी इंडिया बन जाए। कोल इंडिया के पास इतनी जमीन है, जमीन की कोई कमी नहीं है कोल इंडिया के, सब जगह सोलर लगा दें। तो सोलर कितना ज्यादा बेहतर है और उसका खर्चा भी कम है। Have we understood what is the full impact of coal on our society? इतना पोल्यूशन, इतना ट्रैफिक, इतनी जर्जर हालत जमीन की, हाथी हमारे घर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोयले का खनन हो रहा है। तो डू वी रियली अंडरस्टैंड द फुल डैमेज दैट कोल इज डूइंग टू आवर इकोनॉमी, टू आवर सोसाइटी? क्रिमिनलाइजेशन वगैरह तो आप छोड़िए। तो व्हाई कांट वी थिंक डिफरेंट? वी नो that by going to green technologies, we are actually going to be more competitive. Why do you think China is going to green? Why do you think China has announced 2060? Because they know that green technologies are more competitive. Solar is more competitive than coal. So why should we go for coal? If we go for coal, we are actually hurting ourselves. Net zero is net positive. Now, I'm not saying we switch away from coal tomorrow. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल कोयले को बंद कर दो। है 40 साल 50 साल है, सबको हम लोग रोजगार दे सकते, लेकिन धीरे 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 अगर हम लोग ट्रांजिशन करें तब ही जाकर इस काम को हम लोग कर सकते हैं। और ट्रांजिशन आज हम लोगों को चालू करना पड़ेगा नेक्स्ट। तो इसका ग्रीन फ्रंटियर जो डेवलपमेंट मॉडल है, इसमें 4 हिस्से हैं जो मैं कहता हूं। पहले जो हम लोग का एनर्जी सिस्टम है उसको पूरा रिन्यूएबल कर। दूसरा, बंद करो ये सब पेट्रोल डीजल, सब इलेक्ट्रिक कर दो। तीसरा, नए से नए टेक्नोलॉजीज, ग्रीन हाइड्रोजन, टाटा स्टील इज वर्किंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इस टाइप के नए टेक्नोलॉजीज, फ्यूजन, ये वो, इस पे लगा जाए। और चौथा जो है कि ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। डिटेल टेक्निकल मामला, इसमें हम नहीं जाएंगे, अगला पेज। लेकिन अगर आप एक चीज याद करें कि हाँ भाई जयंत सिन्हा आए, बोर किया उन्होंने बहुत देर तक, तो इस बोरियत में जो आपको लगा यार फोन देख ले यार थोड़ा और, इस बोरियत में एक चीज याद रखिएगा प्लीज, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, एक चीज याद करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोगों को नेट जीरो 2070 तक पहुंचना है, 2070 तक पहुंचना। साथियों, बहुत हम लोगों ने डिटेल्ड मॉडलिंग की है, दुनिया के बेस्ट मॉडलिंग एक्सपर्ट से हम लोगों ने बहुत जबरदस्त इसका अध्ययन करवाया, बहुत जबरदस्त। गलत हो सकते हैं, मॉडलिंग है, मॉडलिंग है, कोई परफेक्ट साइंस नहीं है, मॉडलिंग। लेकिन एक चीज, सब जो हम लोग सिनारियो चलाते हैं, एक चीज स्पष्ट नजर आती है कि अगर हमें नेट जीरो बाय 2070 करना है तो हमें अब इमीडिएटली परिवर्तन हमें लाना। दिस इज द डिसाइसिव डेकेड, बिकॉज इसको मैं कह रहा हूं बेंड द कर्व। आज के समय, जैसे मैंने कहा कि हम लोग 7 बिलियन टन पे जा रहे हैं, ये बेसलाइन है हमारा। आज के समय सब लोग अपना पटिया चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, सब लोग कोयले का धड़ाधड़ कोयले का खनन हो, धड़ाधड़। जैसे बताया गया कि कंजम्पशन करो, वेस्ट करो, ये करो। जिस रास्ते पे हम आज के समय चल रहे हैं वो रास्ता हमें कहां पहुंचा रहा है? 7 बिलियन टन पे। 7 बिलियन टन। अरे भैया, हजारीबाग में हमको एयर कंडीशनर की जरूरत है, आप लोग 45 डिग्री सेंटीग्रेड को झेल रहे हैं, 50 में क्या होगा? आज जिस हम रास्ते पे अग्रसर हैं वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का रास्ता है, बहुत ही खतरनाक रास्ता, बहुत संकट का रास्ता है, हमें बदलना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, एक चीज याद रख लीजिए बस, और सब बोरियत है मैं मानता हूं।
लेकिन अपने जान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों नातियों के लिए एक चीज बस आप सोच कर जाइए, अभी कुछ करना है। एक है ना अंग्रेजी में फ्रेज, किक द कैन डाउन द रोड, किक इट डाउन द रोड यार, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। Kick the can down the road. We cannot kick the can down the road. We've already kicked the can down the road for the last 20, 30 years since Rio. Anyone remember Rio? You remember Rio? We've been kicking the can down the road since Rio in 1990. And this is where we are today. So we have to, as you can see, this is the 2070 curve. You see this curve? For us to hit 2070, by 2050, we have to be at about 1.3 billion tons. And that really means we have to start to change very fast. And coal is at the center of it. India is 3.5 billion tons a year. Of the 3.5 billion tons a year, over 1 billion tons is from using coal for power generation. Over 1 billion tons. Your furnaces are using coal right now. Tata Steel is putting out, I mean, Sanjeev ji has the numbers, it's putting out a lot of carbon emissions right now. I'm not saying we change tomorrow, but we've got to find a way to change. We have to do it now. We have no choice. Please understand. हम लोग समुंदर में रहते हैं, कोई नहीं। अगर साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट मेल्ट करने लग जाए, अगर आर्कटिक आइस मेल्ट करने लग जाए, अगर एंटार्क्टिक में आइस मेल्ट करने लग जाए, आपको मालूम है कि समुंदर का जो सी लेवल का जो है राइज कितना हो जाएगा? 2 मीटर राइज लोग बोल रहे हैं, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 मीटर राइज। आर्कटिक आइस मेल्ट करने लग जाएगा, एंटार्क्टिक आइस मेल्ट करने लग जाएगा। 2 मीटर सी लेवल राइज होगा। 2 मीटर सी लेवल राइज होगा, साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मुंबई को क्या होगा? संजीव जी, आपका फ्लैट है मुंबई में, कलकत्ते में है लोगों का फ्लैट। Half of Mumbai in a massive cyclone is going to be devastated. Half of Mumbai. Sundarbans are going to get flooded. In a big cyclone, Calcutta is going to be devastated. This is where we are headed. सब लोग अपना ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, सब लोग अपना मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इस रास्ते पे हम लोग चलते चले जाए। बहुत ही खतरनाक। As I said, there is only one thing. एक चीज याद रखिए, आज, कल नहीं, आज। इसलिए जब भी मुझे कहीं भी कोई बुलाता है कि इस विषय पर बात करें, मैं जाता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है। मुझे बताना है आज, आज, कल नहीं, आज। चलिए आगे बढ़िए। तो यही हम लोगों को अपनाना है। इफ वी हैव टू गेट टू द ग्रीन फ्रंटियर, इफ वी नीड अ नेट जीरो डेवलपमेंट मॉडल टू सेव भोला महतो, to give him a good job, let's give him a green job. Let's build the industries. Let's build the industries that will enable us to provide jobs for people and at the same time get towards sustainability. दोनों बहुत जरूरी है। अब और काफी सारा टेक्निकल डिटेल है, आगे बढ़िए, एक नेक्स्ट पेज। इसमें नहीं जाना, इसमें भी नहीं जाना, इसमें भी नहीं जाना। बस ये कहने का मतलब है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और हम लोगों ने बहुत मॉडलिंग की है। और इसमें एक चीज आप जान लीजिए कि अगर हमें नेट जीरो डेवलपमेंट मॉडल पे जाना है, ग्रीन फ्रंटियर पे जाना है, खर्चा बहुत होगा। और वो टाटा स्टील अच्छी तरह से समझ रहा है, क्योंकि अगर इनको नेट जीरो पे जाना है, दे विल हैव टू इन्वेस्ट। और संजीव जी, इस पे हम लोगों ने और बहुत सोच इस पे हम लोगों ने लगाई है। टू, एज आई सेड, नाउ, आज हम लोगों को अभी से $30 बिलियन यानी 2 लाख करोड़, 2 लाख से ज्यादा करोड़ हम लोगों को निवेश करना पड़ेगा आज से नेट जीरो की तरफ जाने के लिए। और बाय द एंड ऑफ 2030, $100 बिलियन a year we will have to invest. $100 बिलियन a year is about 6 or 7 lakh crores. 6 or 7 lakh crores. You know, this is $100 billion is about what we are investing, totally corporate investment in India today. We're going to have to double corporate investment. वो पाइपलाइन और प्रोजेक्ट्स कहां से आएंगे? इतने लोग कहां से आएंगे काम करने? तो संजीव जी, हमारी बात हो रही थी कि भाई ये करना बहुत ही मुश्किल है। पैसा ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, लोग भी नहीं है जो इसको कर सके। तो इसको करना जरूरी है, एकदम ही करना जरूरी है, लेकिन हम लोग तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल तैयार। इसलिए मैंने कहा आज जागरूकता, हमें इसमें लगना है। आगे बढ़िए।
बहुत रिसर्च किया है, नेट जीरो इज नेट पॉजिटिव, जीडीपी पॉजिटिव, नेक्स्ट पेज, Cambridge Econometrics comes to the same conclusion, jobs positive, we will create jobs if we move to that. एक और मैं बात बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे, कभी एयर पोल्यूशन के बारे में आपने सोचा है? आप जमशेदपुर में, मैं भी देखकर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखता हूं, जो 2.5 नैनोमीटर पार्टिकल है वो तो दिखता भी नहीं है यार। धुआं है, कोयला चल रहा है तो कोयले का धुआं है तो लोग भाग जाते हैं, अरे यार कोयले के धुएं से भागो, जहरीला धुआं है। लेकिन 2.5 नैनोमीटर पार्टिकल वाला जो एयर पोल्यूशन है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके घर में एयर फिल्टर उसको चला दीजिए तो आपको दिखे, अरे 200, 250, 300, 400, ये क्या हो रहा है? हम तो दिल्ली में है, दिल्ली में बाहर जाइए 400, क्या है WHO का 20, क्या है दिल्ली में 400। अच्छा किसी को है नहीं यार, क्या यार 400 है तो नंबर है, हमको क्या फर्क। जानते हैं आपके हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो आपके बॉडी में जा रहे हैं, आपका कैंसर बढ़ रहा है, आपको हार्ट अटैक होने की ज्यादा संभावना है, आपको पल्मोनरी डिजीज होने की ज्यादा संभावना है, कोविड की डेथ्स की ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये 2.5 नैनोमीटर के पार्टिकल इतने छोटे हैं हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो है और आपके शरीर में घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। और लोगों का आंकड़ा अभी तो देखिए WHO और ये सब का बड़ा विवाद चल रहा है कि कोविड में कितने लोग मरे, लेकिन अभी सरकारी जो आंकड़े हैं वो बताते हैं आपको कि कोविड में 5 लाख लोग मरे, कोविड में 5 लाख लोग मरे कुल मिलाकर 2 साल, 5 लाख। सब लोग मानते हैं, सब लोग, इसमें कोई भी बात नहीं, सब लोग मानते हैं कि एयर पोल्यूशन के द्वारा हर वर्ष 5 लाख नहीं 10 से 20 लाख लोग मर रहे हैं, 10 से 20 लाख एयर पोल्यूशन के कारण। और वो एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? कोयले के कारण, पेट्रोल के कारण, डीजल के कारण। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपका निकल रहा है पोल्यूशन, निकल रहा है प्रदूषण, निकल रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपकी बॉडी में कैंसर आ रहा है, आपकी हार्ट अटैक के होने की संभावना बढ़ रही है, किसी को पता ही नहीं। तो इसलिए अगर हम लोग ग्रीन की तरफ बढ़ें, अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बंद कर दें साथियों, पेट्रोल, डीजल, कोयला, तो एयर पोल्यूशन को भी हम लोग खत्म कर देंगे, इतने सारे लोगों की जान हम लोग बचा दें। और किसी दूर के नहीं, आपके पिताजी के, आपके चाचा के, आपके बुआ के, आपके बच्चों की जान बचाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें भी रिसर्च स्टडीज हुई है कि इफ यू आर ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड इन अ सिटी लाइक दिल्ली व्हिच इज मैसिवली पोल्यूटेड, you are impairing their cognitive capacity. That is, their mental development is not progressing well because they're breathing this polluted air. वास्तविकता है, आप गूगल करके अभी सर्च कर लीजिए, उसके फोन देखना है तो ठीक है, आप गूगल कर लीजिए अभी। सो ग्रीन टेक्नोलॉजीज के द्वारा हम लोग एयर पोल्यूशन को भी बहुत कम कर सकते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेज। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई। हम लोगों का आज के समय इंपोर्ट बिल फॉसिल फ्यूल्स का $200 billion a year. Our total imports are $600 billion. $600 billion, of which a third of it is just fossil fuels. But if we go and we make Coal India into Energy India and we do solar everywhere and we run electric vehicles, we don't need to import any fossil fuels. We are going to save $200 billion a year if we eliminate fossil fuels. That's why net zero is net positive. That's what the modeling is telling us. आगे बढ़िए। जॉब क्रिएशन भी बहुत अच्छा होता है, नेक्स्ट पेज। ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है, सरकार की बहुत अहम भूमिका है इसमें। सरकार को बहुत कुछ काम करने हैं, नए इंडस्ट्री चलवाने हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की इंडस्ट्री चलवानी है। उसके लिए वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एज फार एज पॉलिसीज, एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न। और सरकार की बहुत अहम भूमिका है इसमें। आगे बढ़िए। तो इसलिए साथियों, अगर हम लोगों को भोला महतो को अगर हम लोगों को एक बेहतर भारत देना है तो हम लोगों को ग्रीन फ्रंटियर की ओर बढ़ना पड़ेगा। और मैंने तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा टाइगर की जो बात मैंने की वो तो की, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री में भी अगर हम लोग एक बहुत बढ़िया क्लाइमेट चेंज ग्रीन अगर डेयरी इंडस्ट्री बनाए तब भी उसको फायदा, वो गांव में रहकर ही अच्छा कर सकता है। लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी देनी होगी, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी देना होगा। सोलर चिलर बनाना होगा जिसमें कि दूध का हम लोग
वहां अच्छी तरीके से उसका सप्लाई चेन बना सके। नेक्स्ट पे। और साथियों, ये सिर्फ भोला महतो की कहानी नहीं, ये सिर्फ आशीष जी भोला महतो की कहानी नहीं है, ये गीता ओरांव की भी कहानी। गीता ओरांव जी अगर पतरातू में दूर किसी दूर दराज आदिवासी गांव में रहती हैं, अगर उनको हम लोग एक ऐसे सप्लाई चेन में सोइंग रोबोट के साथ अगर हम लोग जोड़ दें, तो गीता ओरांव को बैठे बैठे पतरातू में हम लोग कपड़े भी भेज सकते हैं, कपड़ों की सिलाई भी करवा सकते हैं सोइंग रोबोट के द्वारा, और फिर वहां से रिवर्स सप्लाई चेन लगाकर, रिवर्स लॉजिस्टिक्स लगाकर उनको हम लोग एक ऐसे सप्लाई चेन में बना सकते हैं जिसमें कि उनकी कमाई उसी गांव में अच्छी तरह से। सिर्फ हम लोगों को अपने इनोवेशन, अपने इंजेन्युइटी के बारे में सोचना है कि हम लोग ये कर सकते हैं। संभावनाएं पूरी। अंत में साथियों, मैंने काफी बोर कर लिया आप लोगों को, लेकिन अंत में मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनका आह्वान है एक आत्मनिर्भर भारत का, अगर हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें एक ऐसे भारत को बनाना होगा जो कंपेटिटिव भी है, यानी ग्रीन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं, कंपेटिटिव भी है, सस्टेनेबल भी है, यानी नेट जीरो की ओर बढ़ रहा है, और रिजिलियंट भी है। रिजिलियंट यानी कि कोई जबरदस्त झटका आया, कोई सुनामी आई, कोई यूक्रेन में युद्ध हुआ, कोई वुहान से कोरोना वायरस आया, कोई साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट की मेल्टिंग हुई, तब भी हम रेजिलिएंट हैं, हम बच सकते हैं। यानी कि अंत में इक्वेशन क्या है? एज एन इंजीनियर आई हैव टू गिव यू एन इक्वेशन। इक्वेशन है ए एंड बी, आत्मनिर्भर भारत इक्वल्स सीएसआर, कंपेटिटिव, सस्टेनेबल, रेजिलिएंट। हम एक ऐसे भारत को बनाए कि जो आत्मनिर्भर भारत हो, लेकिन हम कंपेटिटिव हो, हम सस्टेनेबल हो, हम रेजिलिएंट हो, तभी हम जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को हम लोग साकार कर सकते हैं। तभी हम अपने बच्चों को एक बेहतर भारत दे सकते हैं, एक बेहतर विश्व दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग समुंदर में रहते हैं, कुएं में नहीं रहते। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत धीरज से मेरी बातें सुनी, आप सबको धन्यवाद। किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप जरूर पूछें। हम मैडम। Sir, my name is Priya Ravi Ranjan. I work as a sustainability consultant. इसके पहले मैं टाटा स्टील में भी काम करती थी, मिस्टर संजीव पॉल के टीम में। तो सर, पहले तो थैंक यू. This was a very, very enlightening presentation, especially the way you connected climate change issues with social issues. The Bhola Mehta story was amazing. So, sir, my questions to you are two. Number one, ये जो vision है, green vision, इसको at the micro level, अभी भी what we are observing is that the financial models or the corporate governance systems are showing a lot of inertia to align to this green vision, especially in the absence of monetization of the natural capital and the social capital. So the decision making is taking much longer, whereas the situation is very urgent. So if we could hear So something. madam, that's a very good question, though I would have a different view on it. And my view on it is that today, and Sanjeev ji will probably tell you as well, that investors are urging companies to move even more quickly to net zero. And they're rewarding those companies that are working sustainability and net zero into their business plans and their business models. Those are the companies that are being rewarded. And today, given that kind of pressure from shareholders, it's almost become necessary for you and a matter of your own competitiveness to move towards net zero, and which is why you're seeing the largest companies in the world actually giving those statements. I mean, Sanjeev ji, am I right? So the pressure is on. ऐसा नहीं है. तो इसलिए नहीं, बहुत उस पर प्रेशर बहुत बना हुआ है. And जो भी progressive companies हैं like Tata Steel and others, they are moving very quickly in this regard. So I think as far as the capital side is concerned, you'll find that capital is really, really moving in this direction. And as I said, I've just come from Mumbai, where I spent extensive amount of time discussing this issue with SEBI and RBI. SEBI is already moving towards ESG standards. RBI also is looking at climate financing very carefully. These are all areas where everybody recognizes that unless capital gets behind it, it's not going to move.
But I actually think it's not really going to be capital that's going to be the real bottleneck. I think the real bottleneck is going to be, number one, finding the projects by which we can move quickly, and we have to move quickly. And second, finding people who can actually execute the projects. So those are the ones where we have to now really start worrying. Capital, I agree there's work to be done, but I think that capital is going to move quickly. Capital in any case moves quickly. Sir, in the white shirt, wahan piche. Good evening. My name is Sanjay Sabarwa. Loved your talk. You see, the model for being environmentally responsible, can I use that term? Sure, of course. But you see, the point is, that's what I've been trying to emphasize, that this is not something that's an add-on to your business. No. Or that's an add-on to what you do. This is what you do. Completely. So, like, I'm an engineer like you. Right. Same vintage almost. The issue that I feel is a major bottleneck is not awareness. People are aware. People are aware, they're sensitized to the fact that environment is creating a hindrance to their day-to-day existence. Pardushan बढ़ा हुआ है, गर्मी हो गई है, all that. I think a bigger challenge is, and I try to, when I talk to my employees and other people, I find that a roadmap is missing. You see, how do you involve a man on the street to do his delta, not just the Tata Steels of the world. The Tata Steels of the world are too few. And various legislation and various, incentives, etc., will take care of what needs to be taken care of. Our three sources of renewable, unimaginable power is solar, wind, and waves. Solar, wind, and waves. I have a serious difference of opinion with electric, the way it's been handled right now. No government has any business of telling me what comes out of the exhaust. It can tell me that it needs to be zero or whatever it is. Lithium has issues. Nobody's talking about what you're going to do with 60 crore vehicle batteries that will go redundant annually. How would you do? We haven't figured out what to do with lead. So my point is, how does the common Joe on the street, the Mahatoji on the street, put a shoulder to this movement? The government and the intellectual community, sir, needs to have a roadblock for ordinary people. Grassroots. Kitne gaach lagaye? How do we stop? How do we retain water? Because eventually that's in the cycle. So if you are, I completely understand. That's why that's my challenge. I find I agree with you. I agree with you. That's why I try to make it a story that is very real. It's about real people dealing with real problems. What the economists will tell you, sir, is that prices work, incentives work. अच्छा, अभी पेट्रोल का दाम है 100 रुपए. अगर मैं पेट्रोल का दाम 200 रुपए कर दूं, आप चलाइएगा अपनी गाड़ी? कर दीजिए 200 रुपए. और साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप सब्सिडी दे दीजिए. हो भी रहा है. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी आएगी, 200 रुपए इसका पेट्रोल का भाव पड़ेगा, लोग इलेक्ट्रिक चलाएंगे. So the economists will correctly tell you that we've got to make prices work. That is the way in which in a market economy you send a signal which everybody understands, and then everybody changes their behavior. Otherwise, I can't go to every single individual and start educating them and telling them what to do. But if I apply the right prices across the board, it will work. So everywhere in the world, and this is the art of policy making, right? The art of policy making is, where do we set prices? Where do we set certain standards so that, for example, the EU has a very major program called Fit for 55. The EU has already said they want to decrease carbon emissions by 55% by 2030. They know this is the decisive decade. So they have a variety of things they're doing, as Sanjeev ji knows well. They have a carbon trading system with carbon pricing. They have policies they've mandated. They have said by 2030, every single new car sold has to be an electric vehicle. So they have some mandates. They have a carbon border tax as well that they're thinking of. So there is a policy package that you have to put together with a whole of government approach, right? So that you create the right incentives for people to do the right thing.
Because yes, people will be addicted to their phones. People will be watching IPL. People will be going to the club. People will be going to the pub. That's life. So you can't expect them to take on the problem of climate change, right? That's why, we are where we are. We do what we have to do. But do we have the right policy package? The answer is absolutely not. And why don't we have the right policy package? Because the people are not aware. So I don't expect people to make policy. But unless people are aware and they bring it up as a major issue, government doesn't respond. Okay? So therefore, what is very important is we as the public, or me as not really the public, but as a voted elected representative, we collectively have to raise awareness. We have to have the public say, fix this. And only when the public says fix it, will the political system fix it. Now, you go to the US, you go to Europe. I was in Berlin not long after the German elections where, Bundeskanzler Olaf Scholz and his party won. The number 2 political issue there in the elections was climate change. Number 2. In the US, among the top 5 issues is climate change. मैं जब गया बर्लिन में तो लोगों ने पूछा, यार भारत में क्या है स्थिति? भारत में कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है? मैंने कहा, यार 20 विषय होंगे उसमें क्लाइमेट चेंज, किसी को कोई रुचि नहीं, लेकिन इसका प्रभाव पड़ रहा है। आज अगर बिजली की कटौती हो रही है, किस लिए हो रही है? आज अगर सब लोग तड़प रहे हैं कि पानी पानी दीजिए, गर्मी हो गई है, पानी नहीं मिल रहा, क्यों हो रहा? तो हमारे साथ समस्या क्या है कि ये सब इसका कारण, इसकी जड़ क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। लेकिन हम वो डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मैं डंके की चोट पे आपको बता सकता हूं कि आम जनता के पास जाकर पूछिए कि ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है यार, जलवायु परिवर्तन होता क्या है? बोलेगा, यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है। पृथ्वी गर्म कैसे हो रही है, समझ ही नहीं। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर क्या है, मालूम ही नहीं। तो पहला जो हम लोगों को काम करना है, जो हम लोगों की एकदम सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि लोगों को समझाएं। लोगों को समझाएं तो सदन में जब क्लाइमेट चेंज पे जब चर्चा हुई, एक हम लोगों ने 193 के अधीन हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे चर्चा की। साथ मैं मुख्य वक्ता था, पहला वक्ता था क्लाइमेट चेंज। सदन में करीब 50 लोग बैठे, किसी को कोई रुचि नहीं। तो जब तक किसी को हम लोग उसकी रुचि नहीं बनाए, जागरूक नहीं करें, सांसदों को नहीं बताएं, जब तक आम जनता को इसके बारे में कोई खबर नहीं हो, तब तक पॉलिसी भी नहीं बदलेगी। तो इसलिए जनता की एक जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी है कि आप जागरूक हो। इसलिए मैंने कहा कि मेरा जो काम है वो आपको जागरूक बनाने का। आप सबको चेंज एजेंट बनना पड़ेगा। यू मेड द मिस्टेक ऑफ कमिंग हियर टुडे। ये आपकी गलती है, आपकी भी गलती है। आप लोग आ गए, बोले यार मैं तो ऐसे ही बैठा हूं, इक्विपमेंट चला रहा हूं। नहीं, आपको भी जाके बोलना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इतनी जरूरी है बात। इट्स वेरी सीरियस, इट्स वेरी 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 सीरियस। कमांडर साहब, आप स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन हैं, सेबी से भी आपका रेगुलर तालमेल है। Now, big companies, what I understand, SEBI has regulated some top 500 listed companies are required to give that business reporting and sustainability requirements, that report. जब government अगर micro, small, that kind of industry को facilitate करने के लिए बहुत तरह के loan and this type of system करती है, why restrict it to 500? Why not bring it to that level at which your loan facilitation or your support by the banking will come at that level? सर आप ठीक कह रहे हैं, और हमें करना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा। जैसे आज सबको ऑडिट करना पड़ता है, सबको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, आगे के समय कार्बन एमिशंस का भी करना पड़ेगा, लेकिन इन स्टेजेस। स्टेजेस देखिए, जब बड़ी कंपनियां नहीं कर सकती हैं, अभी लोगों को इसमें हम लोगों ने माहिर नहीं बनाया है, उनका स्किल नहीं आया है इसमें, तो हम बड़े कंपनियों में पहले करें, फिर आगे छोटी कंपनी में करेंगे। ये एक एवोल्यूशन होगा, एक दिन में हम लोग नहीं कर सकते हैं।
जैसे मैंने कहा ना कि this is not a, like coronavirus which hits us now. This is not going to hit us now. It's going to take 20, 30 years, slowly, day by day by day, which is exactly what Sanjeev ji said. What was his first story? It was the story of the frog being boiled 1 degree at a time. That is what is happening. Before we know it, we will be boiled. But it will happen so gradually, हमें पता भी नहीं चलेगा. तो समय है, ऐसा नहीं है कि कल हम लोगों को सब कुछ कर लेना है. लेकिन it's all about the trajectory. It's all about the trajectory. तो फोन छोड़िए तो भागी गए नहीं. वो आप डिसाइसिव डेकेड वाले चार्ट पे जाइए, पीछे पीछे जाइए जाइए जाइए. नहीं ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं ये नहीं, एकदम गलत बात, गलत. ये this is it. This is the takeaway chart. This is the money chart. We've got to start now because we have to change trajectories. Do you see? हमें तय करना है कि हम रांची जा रहे हैं कि हम कलकत्ता जा रहे हैं. रास्ते अलग अलग, एक तरफ रांची है, एक तरफ कलकत्ते है. हमें ये तय करना है कि हम कलकत्ते जा रहे हैं कि हम रांची जा रहे हैं. अभी हम जिस रास्ते पे हम लोग कलकत्ते जा रहे हैं, हम लोग रांची नहीं जा रहे. समस्या ये, जनता को जागरूक करना है कि यार दिशा कलकत्ता नहीं है, दिशा रांची है. ये जागरूक करना बहुत जरूरी है. एंड टुडे वी डोंट हैव द पॉलिसीज. We don't have the policy. You know something, Sanjeev? I have done extensive modeling on this topic. I have written also on this. Unless we shut coal down by 2050, we're not going to get to net zero by 20. Yes. There is no way to make it. नहीं हो सकता है. बोलिए भाई साहब. Sir, good evening. My name is Dr. Hishmi Jamil Hussain. Your presentation is mesmerizing. I also listened it last when you presented. So I hope you have factored in the environmental impact of the green things which we are creating. Just I want to quote one example from Germany, that Germany has invested heavily on the wind energy. And what happened when this wind energy has been installed, that was killing the birds. And they changed the policy for installation of the windmills. Similar kind of thing, that there is so much worry because we want to achieve to protect the nature, as well as how your modeling has factored in about the environmental impact of this greening. No, there is definitely environmental impact even from green technologies. There's no doubt about it. But again, you have to come back and ask yourself how big a delta is it? How much of a difference is going to make? It may make a 2, 3, 4, 5% delta, right? But compared to what we are talking about, which is a 70, 80, 100% change, that 2, 3, 4, 5% doesn't change the answer. It does not change. It has marginal impact. So it actually doesn't change the answer. The answer still is that we have to be on this trajectory, not that trajectory. That's the decision we have to take. And that boils down to how soon, for example, do we go to electric vehicles? So in Europe, if they're saying we have to go to electric, every car sold has to be electric by 2030. Are we ready for it in India right now? Absolutely not. And you know where most of the emissions come from? In India, because I've been studying this as well. I'll give you some numbers. In total, from what I remember, we have 20 million four-wheelers in India. 20 million four-wheelers, we sell about 2 million a year, 1.5 to 2 million a year. We have 200 million two-wheelers, motorcycles. But the maximum amount of carbon emissions actually comes from trucks. Again, Tata is a player here. So maximum amount of carbon emissions in India is being generated by our trucks, our heavy vehicles. So if we have to cut back on carbon emissions and be able to get to net zero by 2070, our four-wheelers have to become electric, our two-wheelers have to become electric, and our heavy vehicles also have to become all electric. That's very hard. By the way, an 18-wheeler on a truck going down a highway, changing it to electric vehicle will not work because the battery on it is going to be too large. That's why we need things like green hydrogen. But this is why it's in some cases such a difficult problem, and we have to work on that. These are the things that are most important. These are the challenges that are most important. Thank you. हाँ नकुल जी. Tata Ace. Yes.
No, I no, I think agree. Absolutely. Absolutely. we'll have to do take it. just one last And question. as I'm saying, it is a massive business opportunity now, because you have an opportunity now to leapfrog your competition. We'll take one last question. sir. जरूर वहां से Yeah, so I'm Siddharth. Okay, I have the opportunity to have the last question. Thank you very much for your presentation. It was a fantastic presentation. My question is very, very fundamental. The question is, man is supposed to be the most intelligent creature, and the corporates are supposed to be much more intelligent with respect to their VMBs and various other things. Having said that, 2 million years, nothing happened. In just 200 years, everything happened. That's the, the story, the whole story. Now, question is, what triggered, or which part of the tendency of human which actually triggered to overpower the intelligence? Number one. And number two, what is the guarantee that today we're taking all the precautions, we are making everyone aware? Even the coming to the point of awareness also took so much of time. By the time a lot of things happened, a lot of tsunami happened, as you rightly say. So that tendency, which has actually mercilessly, sort of done all the bad things to the nature, why not that tendency will again crop up in between and again do something? So what we are doing towards that? Because that is the main crux, I think. No, if I understand your question right, what has happened that has led to this kind of global warming? That's your first, Exactly. That's your first question. And second, if there's an innate human tendency to create this problem, won't we create this problem again? Right? Are those your two questions? Let me answer your second question first. The answer to the second question is, I'm not going to be alive by then. So then, it'll be our grandchildren and their descendants that will have to deal with that. But that has been human society since, ancient history, which is problems happen, people fix those problems. Some societies do a better job, others don't do a good job. And some societies flourish and others don't. Rome was a great empire once. Where is it today? The Mughals were a great empire once. Where are they today? So societies rise and fall based on how they deal with certain problems, right? So hopefully they will learn from the past, and learning from the past, they will do better in the future. So that's how human societies work, human civilizations work. There was a civilization in Easter Island. Have you heard about that? That Easter Island collapsed because of ecological problems. But there was a big population of people in Easter Island, but they were not able to solve those problems, and it went away. The Mayans went away, the Incas went away, the Aztecs went away. So societies collapse if they're not able to solve problems like this, and that has been the fate across human history. So we just hope that societies coming, in the next generations are able to solve these problems. Now, what is the problem our generation? हमें किस चीज का समाधान करना है? The problem we have is we are putting too much carbon into the atmosphere. And why are we putting too much carbon into the atmosphere? Because we started using fossil fuels. After the Industrial Revolution, we started using fossil fuels. We started using oil. We started using coal. And primarily it was these fossil fuels, primarily crude oil, which we dug out of the ground, and coal, which we dug out of the ground, and which we then started to burn, that massively resulted in an increase of carbon in the atmosphere. Pre-industrial era, pre-1800, we were putting the amount of carbon in the atmosphere was 180 parts per million. Okay, 180 parts per million. After we started burning oil and we started burning coal, in 220 years, we've gone from 180 parts per million, and you should see the charts, they're really, really scary. Basically, we went from 180 parts per million to 414 parts per million, right? So suddenly we have a lot more carbon and carbon equivalent greenhouse gases in the atmosphere. Now, how many of you know when you put that kind of, the amount of greenhouse gases in the atmosphere, what happens? Why do we heat up? Does anyone know the scientific basis of why putting so much greenhouse gases in the atmosphere heats up the earth? Who knows the answer to that? Exactly. Madam is right. That is exactly what happens.
जब ठंड होती है तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं ना। हम कंबल क्यों ओढ़ते हैं? कंबल इसलिए ओढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी हीट है फिर वो एस्केप नहीं करती है, कंबल ओढ़ के हम बैठे हुए हैं। अब आप समझिए, हम इतने ग्रीन हाउस गैसेज अगर हम वातावरण में डालते चले जाएं पृथ्वी के इर्द गिर्द, तो आप समझिए कि पृथ्वी पे हमने रजाई चढ़ा दी, कंबल चढ़ा दी। तो पृथ्वी पे हमने कंबल चढ़ा दिया है, तो गर्मी तो होती चली जाएगी ना। इसलिए गर्मी हो रही है, रोज दिन पे दिन गर्मी होती चली जा रही है, क्योंकि हम लोग कोयले को जला जलाकर, पेट्रोल को जला जलाकर हम लोग कार्बन को वातावरण में डालते चले जा रहे हैं और वो कंबल बनता चला जा रहा है। So that is the part we have to solve. We have to reduce the amount of carbon we're putting in this atmosphere. At 414 parts a million, 2 degrees, 3 degrees centigrade is done. At this point, I would bet, even with all of our efforts, we are going to go up by at least another degree and a half. So we are set for 1.2 to 2.5 probably. No matter, unless we invent carbon capture, there's only two solutions. In fact, there's only one solution. I will tell you this with all seriousness as an engineer. There is only one solution to actually reduce carbon in the atmosphere. And you know what that is? That is fusion power. Now we can, at dinner, if anyone, Sanjeev, I'm sure is interested, other engineers may be interested. If we can get fusion, fusion is basically unlimited energy without any carbon. If we can get unlimited energy, we can create direct carbon capture machines that will pull carbon out of the atmosphere and reduce the amount of carbon and sequester it and put it into the middle of the earth and finish it off. That's the only way we can avoid 2.5 degrees centigrade. Otherwise, with 414 carbon parts per million, it's going to get really hot. That is science. Whether you like it or not, whether I like it or not, that is science. That's where we are headed. Thank you very, very much. Namaskar. Sorry, can you hear me? Sorry, this is not part of the agenda, but I just needed to make a short announcement. My friend Kapil Kaul, who is the national president, this is the unconditional apology. I forgot to mention completely that you were online and with us. I know that I was disappointed that you were not going to join us physically, but that did not mean that I was ignoring you this evening. I'm very sorry. I'm so glad that you were here with us, at least on a virtual mode. Thank you so much for all your support, Kapil. And I'm really grateful that you're here with us even now. Thanks. May I have a word out here, Nakul? I think we had a very, very interesting talk. और एक्चुअली मुझे बीच में इंटरजेक्ट करना इसलिए पड़ा क्योंकि जैन साहब ने कहा था कि उनको 9 बजे 9:30 तक जल्दी अगर छोड़ दिया जाए, but the question answer dialogue was going on so interestingly that I had to interject in between. मुझे जिस ढंग से सर आप जो बातें कर रहे हैं, मुझे एक व्यक्ति की याद आती है, वो है मिस्टर एल गॉर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जिस तरह का आप जागरूकता पैदा करना चाहते हैं समाज में, लोगों में, it is very, very important that this presentation or this type of talk must be given not only in the industrial town, district level पे, possibly village level पे, हर गांव में जा के लोगों को जागरूकता होनी चाहिए. He got the Nobel Peace Prize for climate change, and definitely what this kind of talk which we are giving, repeatedly giving in every forum will create an awareness, will bring a very positive change in the thinking of the people. So thank you very much for enlightening us. I will now request Mr. Himadri Sarkar to conclude the session and give the word of thanks.
Good evening. Vote of thanks, I believe, is the most boring part of the whole program. In any program, in fact, people are ready to get up, and I am holding them back. This is not fair. But I have to do it because it is mandatory and it is, it's a part of the agenda. But before I go into vote of thanks, I would like to share the significance of this day. This day, 9th of May, happens to be Kobi Guru, our Gurudev, Rabindranath Tagore's birthday. Actually, in Bengal, it is celebrated every year on Pochishe Boishak. We call it Pochishe Boishak, means 25th day of Boishak. But it varies from year to year because of Bengali calendar. His birthday is celebrated as per Bengali calendar. So next year it could be 8th of May. So I take this opportunity and from this platform and would like you to join me to express our respectful homage to the great poet on this day. Thank you. Now coming to vote of thanks, I have to thank many people, and at the same time I was told to sort of summarize the whole thing. What can I say about our chief guest, Jayant Sinha? I was mesmerized. I can only say I was mesmerized. And what my friend Sanjeev has made my things things easier by saying the thing which I wanted to say. That's what it seems that it's a obsession or passion for you to say on climatic changes and this pollution control and all. And I would also request you to, and you said that you like to give such kind of lectures everywhere. So it should percolate down to the level, down to the district level or whatever you call, to the down the level, not only in corporate houses and this kind of seminars. I'm not going to touch many things. I'm very bad at figures. So I was noting down something, but I would say that you see in Hazaribagh, in younger days, it used to be a summer capital sort of Bihar at those days. And I'm a Jamshedpur boy. I remember during October month when the Durga Puja was in the 1960s. We used to go to see Para Jatra, you know, the Jatra, whole night program. We used to take shawls with us in the month of October. Now you see in Jamshedpur, I have the figures with me from December and January. February first week, winter is gone. And December में भी आपका वो AC बंद होता है दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद तब तक दिसंबर चलता है. This is only 2 months you are getting winter in the and 45 degree is the thing which we reached this year, and next year we don't know what, but this year the March and April was the hottest. It came out in newspapers in the last 100 years. But you said every year cyclones are due to ocean warming, and it is this kind of tsunami cyclone are coming. It has become very frequent nowadays. Last year we saw 2-3, and that Puri, Odisha coast and all. It comes to Jharkhand and goes via Bangladesh and goes out. So this is an area of concern which must be looked into, and again I will request you, sir, to look into the aspect of going into even to villages. आप बहुत अच्छी तरह से convince कर सकते हैं. You can do that. And about coming to our friend Sanjeev Paul, he said there is a tremendous acceleration in growth in 30 years in all sectors. This was unprecedented. You're right. Again, with the growth and acceleration in all sectors came that carbon emissions to the extent of, and you said US is the biggest, 25%, if I'm not wrong. Phasing out this main source of this pollution is by
phasing out the coal by some other kind of energy, which is to be seen. One question comes to my mind, sir. If our thermal plants, power plants, they produce about 75% of energy, if I'm not mistaken, 70% energy. If you may convert those electric vehicles emission by way of EVs or some other things. But what about the major source of energy coming from coal? If coal is to be phased out, what is the alternative? That came to my mind. I didn't get that answer properly. It can be phased out. Yes, renewable. Okay. Zero emission. Thank you. So with this, then our Sanjeev ji said by 2050, India will be producing about 450 metric ton of steel. That's a very good news and very encouraging. Thank you so much. Now coming to the main part of vote of thanks. This is what I could assess with my limited knowledge, and in fact, I'm not qualified enough to judge you both of you. Whatever I could gather. For vote of thanks, firstly, I have to thank our past chairman, A.K. Srivastava. You know, he was instrumental in bringing our Sir Jayant Sinha. So I have to first thank him, then anybody else. Then we have a representative of Tata Group of Companies, representative of Jamshedpur Management Association, Rotary Club, and ex-servicemen of Veterans Group, CII representatives, Asia representatives, Chamber of Commerce, and last but not the least, the members of the press whom we are looking forward to give a good coverage of this whole event. And I forgot again what Nakul missed, I again missed it. Should have, yeah, Kapil Kaul, our national president, is here virtual. He has joined us and he's online still. I'm sorry, sir, I should have taken your name earlier, again, but you see, it happens when you cannot see somebody here, you tend to forget it. So, but your words were very encouraging. We would have liked you to be here, but for some his personal commitments, he couldn't come here, but next time I'm sure he will join us. With these few words, may I be excused now. Thank you. So before we end, we have, all the people sitting here are from Jamshedpur. But there is one gentleman who has come from 60 kilometers just to listen to you. So I'll request Mr. Sanjeev Malik, who has come all the way from Chaibasa. He wanted to present you a small bouquet. Please come. Okay. I think we'll all the session is now over, and I request everyone to please join for cocktails and dinner. Thank you, sir.